design thinking. I wanted more people to be here. It's an exercise which all the companies who are groundbreaking companies who are disrupting the marketplace. So we'll set the context for business strategy, and then that lead into design thinking. That will lead us into disruptive business model, that how to craft your business model. Some of the examples given are very big companies. So many people may not be able to resonate, yaar, humko kya lena Amazon se, humko kya lena, but they were sometimes small like you. They were operating from garage. They also had failed business. Jeff Bezos has a failed business before that. And we all can learn from these companies, from these founders, these strategies, what they did, and what worked for them. So we'll talk about business strategies today. So how companies make decisions in the long run. First of all, you got to look at your competition. Yesterday in our board meeting, every Monday actually, we do a board meeting with Anil Goyal and Tanuj and myself and Pradeep and Umaji. So we did the competitive analysis of all our competitors. We pulled out the ROC reports. What is their turnover? What are their profits for last 3 years? How many members they have? The BNI, the Success Gyan, TAI, Bada Business. We did all comparative analysis of all these companies. So you need to look very closely at your competitors. Actually, 3 competitors. I had shared a format a few days back where you do competitive analysis, SWOT analysis against your 3 competitors. What are your strengths? Competitor 1, competitor 2, competitor 3. What are your weaknesses? Competitor 1, competitor 2, competitor 3. What are your opportunities? Competitor 1, competitor 2, competitor 3. And then what are your threats? Competitor 1, competitor 2. This exercise alone will take you at least a month or weeks. Once you do it, you will realize that where do you stand against your competitors. What's their revenue? What's their turnover? What's their business model? How many members or how many clients they have? How old the business is? So that analysis, every entrepreneur, every company must do. And then your identify strength, weakness, opportunity, threat, successful strategic planning. And then going forward, initially you focus on one business, but going forward, you're going to have multiple businesses too. So create a structure for growth where on one dashboard or you are able to manage multiple businesses. Then comes management. And as a management is your job as an owner. So learn how to work with people to be successful. So we already did recruit, develop, manage, organize, retain. And what makes for a good manager? Why are managers needed in a firm? What are the various managerial functions? This we did cover in the last 2 sessions. How to work with employees, promotion, long-term motivation of employees. So today what I did with Paras is all about this. That motivating them, giving them awards, appreciating them, and they're going to, now going back home, they'll post it on their social media, they'll show it to their families, I got this award. And there's a very important saying, everyone note down. When you tell your employees, give them a reputation. So give them a reputation to live up to. That's the actual thing. When you tell someone, if I say, Amol, when he starts his term as a president at Tajurba, and I tell him that you are going to be the best president here Tajurba ever had. Now it's up to him to prove me right or prove me wrong. And the chances are he'll prove me right. कभी तो इज्जत का सवाल है, करना पड़ेगा. There was an experiment done in Australia. They picked up, maybe I've told you this story, but if I'm repeating this, please tell me. Because this I repeat many times, so people say, बार-बार क्यों बोल रहा है?
But I've told this story before, so you can stop me, sir. We have heard this story. That's perfectly all right. So they picked up 10 students, told them that you are the best student we have picked up, and you're going to be, coached by best teachers so that we can improve our results nationwide. And they picked up 10 teachers also and told them the same thing. And the results happened as desired. Now the catch here is that the students were not the best students. But they were given a reputation to live up to. The second catch is even the teachers were not the best teachers. So here when you give them a reputation to live up to, that you are the best, tell this to Shubhangi, Amol, कि उसको अपनी टीम को बोलने का, you are the best ST, you are the best VP I have, you are the best coordinator, you are the best team captain. Give them a reputation to live up to. Even if you go to a restaurant and you tell a waiter that I know you are going to give us a very good service. अभी वो जान लगा देगा कि यार इज्जत का सवाल है, नहीं तो बोलेगा यार तू तो बेकार आदमी निकला. So everybody's got potential. When you give them a reputation to live up to, remember these words are golden words. And the second golden word is what gets appreciated gets repeated. So the more you appreciate, बहुत लोग गलती करते हैं, defects निकालते खाली employees में भी. That demoralizes them. When you appreciate someone for a genuine reason, जिसका performance खराब है, that person learns. पर जिसका खराब है उसको डांट लगाए वो और खराब हो जाएगा. That person or that employee's performance will further go down. So always appreciate the good one, the other people learn. हमारी माँ कहती थी बेटी की तारीफ करो, बहू अपने आप सीखेगी. So that's about management. Then marketing. So marketing research, customer segmentation, 4 P's, product pricing strategies, organizing a marketing campaign, and customer lifetime value. And customer acquisition cost, which small businesses normally make mistake. That acquisition cost बहुत आ रहा है without calculating and keeping in mind the customer lifetime value. If a customer is giving you repeat business, then calculate the lifetime value. Accordingly, acquisition cost and marketing cost, you can decide whether it is more or less. And the customer is giving you more referrals. You should be aware of customer lifetime value and customer bringing more customer. Then you can assess that what is the cost is good or cost is more or cost is less for acquiring a customer. So marketing, continuous pipeline of leads. Then accounting, we already discussed. Bookkeeping, financial statements, your profit and loss account, your cash flows, and ratio analysis. Negotiation, persuasion, decision making. You got to make better professional choices. We'll do a nice negotiation mastery course also. And your sales conversion need to improve. So you're getting leads. Now you focus on your sales conversion, whether your conversion need to be tracked in your OKR. You're converting 5% or 10%. What is normal industry conversion rate? You are above that, below that. Then set OKR accordingly to improve that. So what makes a successful strategy is about making choices. It's about deliberately choosing to be different. That what difference you can make in the marketplace. Why should customer buy from you? So simple, consistent, long-term goals and short-term goals. Deep analysis of competitive environment will help you in strategy. And then see what resources you got. Whether you have team, whether you have funds to spend on your sales or marketing or lead generation campaigns, or you got to do it yourself, do guerrilla marketing.
There's a company in Bangalore, Interior Wala. They didn't have funds. They were a startup. So one of the partner every Saturday will go to the suburbs and contact the buyers, give them flyer, the new allottees of the flat. He'll put the flyers under their door and give them a mafia price, 2 BHK, very, very low interior price, which attracts everyone. Arey yaar, ye to sabse sasta hai. They got one contract and after that got into their RWAs, Resident Welfare Associations, in their WhatsApp group and kept showing that as a show apartment and did multi-crores of business. Multi-crores. In a complex, there are 1,000 apartments and you end up getting few hundred apartments is a big thing. That's guerrilla marketing without spending any money. There's another guy I know, Deep Bajaj, P. Buddy. He was not funded earlier. That young man will carry a backpack. He's manufactured a device for women in unhygienic toilet. Women can stand and pee. Very revolutionary concept. एक गत्ते का छोटा सा डिवाइस है. But वो लेके घूमता था. I'll see any woman and say, ma'am, use this and give me your feedback. Use this, give me this feedback. So he distributed thousands of free samples in Thai events or various meetups. That's guerrilla marketing. And now that guy is funded and he's all over the place. P. Buddy, you can check his profile. Strong will leaders with solid decision making. So thousands of companies compete for a place under the sun, but only few succeed. So I was doing one-to-one with a member today. He's into a product which everybody is doing. I said, very few people are, for example, chartered accountant now. Very few people are searching for chartered accountant. Sabke paas hai. Right? Everybody got chartered accountant. Everybody's got a tailor. Everybody's got a jeweler. Everybody's got a barber, fixed barber. उसके बाद जाएगा बाल कटाएगा है ना सबके पास right? So now if you get into the insurance, Amol, business coach, अभी बहुत हो गए. So in these kind of industries where you're getting very few organic leads. Now how do you do your marketing? It's a push marketing. You have to keep running your advertisements or content or your differentiator or a lot of networking, word of mouth. You got to be very aggressive in these kind of fields where you are known in the marketplace that you are the best. And everyone sitting here should work very hard and aim for to be the best in whatever they do. Make your skills, make your name, make your brand so strong that you should be the best in your industry. Whatever it takes. Whatever it takes, be the best. There's no fun living a mediocre life. That business will die. It won't survive in this century. You will struggle forever. You got to keep on enhancing your skills, keep on enhancing your branding, keep on enhancing your network. So that first name pops up is yours. You are the best hospital, you are the best doctor, you are the best insurance advisor, you are the best healer, you are the best, equity. If we talk about Zara, the world's largest clothing retailer. Now, I come from garment industry. I remember that our buyers used to have 4 seasons. Winter, summer, spring and holiday. They created every 2 weeks or 4 weeks, there's a new fashion cycle. Our buyers used to buy 6 months in advance and a lot of time will get stuck. Fashion changes, taste changes. They were placing orders in June for December, January delivery. A lot of things change in 6 months. So both ends were suffering. Sometimes the buyers thought we bought a wrong. That is the reason we got out of
garment business, and that is the reason we lost 22 crores in 2001. Buyers thought they placed the wrong order. They wanted to back out from their commitments. Zara changed it. But how can we, and this we will cover in design thinking today. So how can you come up with these kind of revolutionary ideas? We are starting a network, elite network for people. We did design thinking process, and these are the stick-ons. First session with 5 of us. Keep giving ideas. Each idea goes on a separate stick-ons. You will learn all this. And you come up with some crazy idea which nobody has ever thought of. Otherwise, we'll keep on doing traditional way, whatever is being done. So Zara changed it. A designer needs only 3 weeks to have an item in store. So all the supply chain, all the manufacturing process changed, and Zara became one of the largest retailer, whereas the Walmart existed 30, 40 years ago, Zara. So this is a very original idea, hadn't been implemented before, and a true success story. Same way, failure story, Kodak. So for many years, Kodak dominated the industry. But they really thought, what we are doing, we are the best. And we have no threat. People will not change for digital cameras and digital photography. And that's where 130-year-old company went bankrupt. And they were the leading player. 130 साल मार्केट लीडर होने के बाद कोई कंपनी फेल हो सकती है. हम आप कहां हैं? Where do we stand? When 130-year-old company can fail and go bankrupt because of the market disruption. So there's corporate strategy and there is business strategy. 2 kind of strategies are in place. So corporate strategies, where do we want to compete? And business strategies, how do we want to compete? So top management, if you have a team, CEO, board of directors would be the one that decide where the firm will compete. And major issues, top manager decide vertical integration, diversification, mergers, acquisitions, and capital intensive investment, allocation of resources between the different units of the company. And then new product approval, service line, which could be added to the company's existing product. In our case, we do it. So in my case, I'll keep on adding new services. We added OKR. We have one of the best sales courses here. We have the bulletproof marketing. How do you own your marketing? Then we have OKRs. We have time management. We have negotiation skill mastery. And then we're going to add, on top of it, we're going to add how to scale up your business to 10,000 crores. As a small business owner, how to have that strategy to grow to that level and become a unicorn. And everybody's got potential. Don't say that my business don't have potential to become a unicorn. Nokia was not a mobile company. They come from Sweden and disrupted the entire market with their phones, and again went out of business too. So these are the big time decisions, the future and a part of corporate strategy. So business strategy is about how a company competes within the chosen market and gaining a competitive advantage to make your business successful. And this is called competitive strategy. So depending on your organization structure, business strategy will be implemented by business managers or yourself as a small business owner. Let's take a case study of Amazon. The largest retailer operating online. It started as a bookstore, only selling books online. And today,
It sells everything on the world available. And who's now disrupting big time? Amazon. Such a big retailer is getting disrupted. Anybody can name it. कौन कर रहा है इनको disrupt? Blinkit. कौन बोला? Blinkit. एमपी भटनागर सर। हाँ जी, और कोई बोलेगा? फ्लिपकार्ट। फ्लिपकार्ट सेम है। तो भटनागर साहब ने ठीक बोला, ब्लिंकिट डिस्टर्ब कर रहा है उसको। अभी आप कोई चीज के लिए 2 दिन क्यों वेट करोगे अगर 8 मिनट में मिल रहा है? So they disrupted the retail model by supply chain, delivery. नॉर्मल आदमी क्या सोचेगा कि यार डिस्टर्ब करते हैं, इनसे प्राइस कम करेंगे, इनसे बेटर प्लेटफॉर्म बनाएंगे, खूबसूरत वेबसाइट बनाएंगे, कुछ नए प्रोडक्ट रखेंगे, यही आएगा दिमाग में। लेकिन ब्लिंकिट डिड अनथिंकेबल कि 8 मिनट में कैसे करें। एंड दे ओपन वेयर हाउसेस इन एवरी लोकेलिटी। हमारे घर के पीछे 2 लेन पीछे वेयर हाउस है, 2 लेन पीछे, तो 4 मिनट में आता है। और सबसे बड़ा सेल अमेजॉन का मोबाइल फोन्स का है और कंप्यूटर्स का है, लैपटॉप्स का है। They have earlier they started with some FMCG products. Now they got into mobile also. They're delivering mobile phone in 8 minutes. अभी हमारे सड़क पार मार्केट है, उधर जाने का मन नहीं करता है। सड़क पार, unless we go and we want to have some coffee or anything. So business can be disrupted with lot of things which we'll cover in one of our session also next time. So the world's largest online retailer follows a cost leadership strategy. That they are leaders in lowest cost. Same like Walmart. Then they have a very strong focus on technology also. And AWS, Amazon Web Services, is one of their biggest revenue generation vertical. And they use big data analytics. आपका एक behavior, और आज से नहीं, since 2003-4 they had artificial intelligence. That everyone who logs on the Amazon, उसको एक different, normally website क्या होता है? एक home page होता है। Amazon का home page is as per your behavior, as per your choice. What you like to see, it will show you that. Amazon Web Services is actually a bigger company than Google Cloud. Right. Not many people know that. It is, actually. Thank you. So once the list of product of interest for a specific customer has been identified, then the recommendation tailored to your preferences. So corporate strategy addresses the entire scope of a company and answers the following questions. Which industry or industry should the company compete into? What would be the geographical scope of operations? National, international, or global? Should we diversify our business? And if yes, at what level? How should our company be organized in terms of product development, marketing, production, sales, customer service, and distribution? And which of these have to be in-house, which are going to be outsourced? And should the company enter alliances and make acquisitions? So what type of resources and capabilities should our company develop to gain competitive advantage over our competitors? And how should the company monitor the industry environment so its strategies conform to the market needs? So now I want you all
to write your competitive advantage in your industry. Think about it, do some brain polish and type in the chat box, what is your competitive advantage which makes you different than your competitors? How are you better than your competitors? Whether it's cost, whether your expertise, whether your experience, whether your delivery model. So Sudhir says better client and candidate engagement. Sudhir, does this, your clients know this? Yes, sir. They know it. That's why they give us repeat business and more references as well. And those who are new, are they able to find out you are the best? Probably not. The one-on-one I had with you, you showed me we are not ranking in the Google search, so we have to improve on that. I'll take your help on that. Those, you know, what happens is when I deal with you, then only I will know you are the best. Yes. But the thing is, before I have to know you are the best so that I come to you. Right. Understood. That's the key here. So what marketing message we give around, that requires your PR strategy, your marketing strategy, your branding strategy, that you're all over the place. People search wherever they find you. That's it. They hear about you, that you are the best. All right, sir. Understood. So, you know, there's a saying. हिंदी में हम लोग बोलते हैं मेरी शादी तय हो गई. अच्छा, कैसे? मेरी तरफ से हाँ, अभी लड़की की हाँ आनी बाकी है. तो शादी तय कैसे हो गई? Yeah. तो हम सोचते हैं we are very good. I have 42 years of experience. I am the best OKR coach. Yes, but who knows it? कौन जानता है I am the best? So spreading that message around in your marketing, in your PR, in your branding, and then people know you are the best. You know, like Amazon, everybody knows. Same way, a lot of products and services we use, we already know. It's because of their years of marketing, branding, and their messages and creating success stories. It's a journey. But we need to keep on working on that all the time and keep that in mind. And at the same time, our product and service have to be top-notch. Good. So everybody has got this. Now, how do you get this message across? You know you are doing this thing better than anybody else. Or if you are not doing it, work on it. Go back, work on it. But how do you get those skills? How do you become the best? Having those skills and upgrade your skills. And then letting people know. Start small. Start with your network. You know, maybe 100 people in your network in Tajurba, these 160 at CBLM, or silver or gold chapter you are part of, they should at least consider you are the best. Your winning starts from there. You don't have to right now reach to lakhs and crores, but at least start reaching to the first your circle. They should know you are the best. So two things need to happen, that when they need product and service you are offering, you should be on top of their recall in their minds. That's number one. Everybody note down. आपको 100 लोग, 200 लोग, 500 लोग, जो भी जानते हैं 1000 लोग. In your network, in your phone book, in your relatives, your friends. So call 5 people tomorrow. Ask them what do they think about you professionally. Give me your honest opinion. If they don't consider you are the best, you have a long way to go. तो पहले आपके नेटवर्क को पता होना चाहिए कि you are the best.
So आपका एक पड़ाव, एक one step is well taken. Because they will need product and service, you will be on their top of their mind. And if they see the opportunity outside, they will recommend you. And if your relations are very good, they'll create opportunities for you. I know a very good healer. I know a very good life coach. I know a very good printer. कहीं भी देखा वो अपॉर्चुनिटी निकलता है. Everybody understand? Yes? Yes, sir. So your mission, vision, goals, value statements. So you got to formalize this. If you haven't done that, and that should be on your website. Why do you exist? So the mission statement addresses the question, why do we exist? What is the fundamental reason for our organization's existence? And then your future position is your vision. And what do we want to achieve in the future, and who do we want to become? The specific goals, objectives. And then your core values, I call it code of honor. Very well defined, and you should be believing in that and keep on repeating in every of your corporate meeting. That what do you believe in? How are you going to behave? So maximizing profit is important, but your core values. And everybody should have code of honor for themselves. First of all, for self. कि मेरा behavior कैसा होने जा रहा है? What values? जो मैं commit करता हूं वो करता हूं. Do I show up on time? Do I maintain relationship? Is my communication clear with people? Your code of honor. Do you honor your friendships and relationships? Do you help people whatever possible in your capacity to help? Then your code of honor for the family. Work on that, write that. And then code of honor for your company. 3 code of honors: your individual, your company, and your family. So people want to work for an employer that is socially responsible and believes in integrity and business ethics. If the company owner or founders are not honest, they are not ethical with their customers, with their employees, that's a sure shot disaster. Sure shot disaster. अगर कहीं से आपके पास एक्स्ट्रा पेमेंट आ जाता है किसी से, एंड यू टेल योर अकाउंटेंट, कोई बताने का जरूरत नहीं है, वो बोलेगा तो बता देंगे क्या हमने देखा, आ गया, अभी वापस कर लो. और इफ यू गो टू ए सुपरमार्केट, कैशियर आपको 100-200 रुपया गलती से ज्यादा देता है, आप देखते हो चलो यार दे दिया. वहां से शुरू होता है इंटेग्रिटी. Then your accountant will say, I have the birthright to steal. हमारा बॉस चोर है तो मुझे क्या चोरी करने में मना है. हमारे यहाँ एक एडिटर आया था किसी कंपनी से, मेरा पहचान वाले का कंपनी है, उसके प्रोडक्ट, तो मैं उसके प्रोडक्ट खरीदता था. मेरे पास आया, सर एक बात को बुरा तो नहीं मानोगे? मैं कहा नहीं. बोला मत खरीदो, ये साला एक्सपायर्ड चीजों पे रीलेबल करके बेचता है. ये जैपोज एक कंपनी हुई थी जिसको अमेजोन ने खरीदा था 1.2 बिलियन में. इसका टॉनी हीश करके फाउंडर है. ही रिटन ए वंडरफुल बुक. द कस्टमर सर्विस
So far I have read, जितना मैंने पढ़ा, it was the best. And their core values, their entire team, case studies and media coverage is amazing. For their customers, they have wow experience, 365 days return policy. You buy one shoes, you can have 6 shoes and both ways courier. You select one or don't select anything, go back at their expense. The Tajurba mission, learning, empowerment, business growth through community commerce. Vision, connecting 10 million job creators, SMEs and startups, and thereby creating one of the largest ecosystem and support system for entrepreneurs across the globe. IPO by the year 2027 and wealth creation for our members and shareholders. Code of honor, never abandon a teammate in the time of need. Abundance, consistency, attitude of giving, commitment to build a strong Tajurba community, commitment to lifelong learning, contribution, positivity. So these are our core values. How many of you have worked on your mission, vision and core values or code of honors? Or who has not done it? I have not done. मिशन विजन गोल्स तो बना लिए हैं, बट वैल्यूज अभी बनानी है. हाँ मकरन बोलो. मैंने आपने कहा ना कि किसने किया नहीं है, तो मैंने अभी तक किया नहीं है. लिखो, करना है. ओके. वैल्यूज बहुत लोगों ने नहीं किए हैं. दिस इज व्हाट ड्राइविंग फोर्स. हमारा जिंदगी जीने का मकसद है वो. That is what part of, integral part of your branding, that what values you have. माया कहाँ गई? सर कैन आई से समथिंग? हाँ बोलो मकरन. मैंने सर एक चीज नोट किया है, व्हेन आई रिफ्लेक्ट बैक फॉर लास्ट 8 years आई एम डूइंग द बिजनेस. जी. एवरीवन नोस कि कभी कभी तुमको बिजनेस देने के लिए किसी को खुश करना पड़ता है. इट्स अ पार्ट ऑफ द गेम. आई मीन यू कांट डिनाई दैट. लेकिन मैंने ये नोट किया है कि या तो मेरे सामने ऐसे कस्टमर आते नहीं है, या तो फिर अगर आ गए तो मेरा उनके साथ ज्यादा देर नहीं जमता है. क्या मतलब अभी मुझे एक ऑर्डर चाहिए, तो कोई परचेस ऑफिसर है, वो बोलेगा मगर इसमें मेरा कट रखना, मैं तुमको ऑर्डर देता हूँ. हाँ. तो अभी इतना कंपटीशन है, तुमको ऑर्डर चाहिए, बिलिंग करना है, तो यू आर बाउंड टू टेक दैट ऑफर. लेकिन फिर ऐसा बंदा कल को तुमको छोड़ के दूसरे के पास भी जा सकता है, और ये होता ही है. हाँ. तो ये जैसे आप हमेशा कहते रहते हो कि देयर इज अ लॉ ऑफ अट्रैक्शन, तो ऐसे लोग मेरे पास आते ही नहीं है, या मेरे ऐसे लोगों के साथ जमता ही नहीं है. फॉर्चुनेटली आई हैव नो सच कस्टमर्स जो मेरे से कट लेते हैं. वेरी गुड. दैट्स योर कोर कोड ऑफ ऑनर. कि मैं रिश्वत दे के काम नहीं लूंगा. दैट्स परफेक्टली ऑल राइट. और कई लोग ये नहीं रखते उसमें. दैट्स ऑल्सो ओके. ये क्लैरिटी होना चाहिए कि ठीक है इंडिया में ऐसा चलता है, नहीं तो मैं सफर करूंगा, काम नहीं मिलेगा, मुझे रिश्वत देना है. तो अपने कोर वैल्यूज आपको बनाने हैं कि कहां पर. अभी माया का कल मेरे को 12 बजे मैसेज आता है रात को. कितनी देर में जवाब आया तेरे को माया? सर उस समय तुरंत आया. अगर मैं दिन में करती हूँ तो तुरंत नहीं आता है. तो ये माया का ट्रिक है तुरंत जवाब लेने के लिए. नहीं उस समय मुझे थॉट आया. नहीं लेट नाइट नहीं, मुझे ये याद था कि सर बोलते हैं कि मुझे 11-12 बजे भी मैसेज करोगे तो मैं रिप्लाई दूंगा. तो उस समय मेरा रिसर्च टाइम भी रहता है, इसीलिए मैंने किया सर. तो क्वेश्चन ये है कि जो कहना है वो करना है, खाली हल्की बातें नहीं करनी है. What you say, you do. That's part of your personality. That's part of your ethics and core values. So everybody must try it. I call it code of honor. और 3 code of honor. एक अपने लिए बनाना है, एक अपनी फैमिली के लिए बनाना है,
एक अपनी कंपनी के लिए बनाना है। अब वो हर जगह लगा दो छाप के कि हमारे ये प्रिंसिपल है, इसके ऊपर हम लोग जिंदगी जीते हैं, और उस पर फिर कॉम्प्रोमाइज नहीं, उस पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, नॉन नेगोशिएबल। और ये तो कोर वैल्यूज का बात है, बट अदर थिंग्स व्हेन यू मेक ए चेकलिस्ट। मेरा एक दोस्त था बेंगलोर से, तो प्रकाश गुरबख्शानी, बहुत बड़ा बिल्डर था। तो 2012 में जब बहुत मंदी आई रियल एस्टेट में, तो ही सोल्ड एवरीथिंग ही हैड। उसका अच्छा प्रिंसिपल था कि एक बना लूंगा, बेचूंगा, फिर नया शुरू करूंगा। तो ही वाज नेवर टाइट ऑन मनी, पहले अपने लेंडर्स को पैसा दे दूं वापस और डिलीवर कर दूं प्रोजेक्ट, देन आई विल गो इनटू न्यू प्रोजेक्ट। सो ही ऑलवेज हैड सरप्लस कैश। बोला मुझे बिल्डर्स फंसे हुए हैं, किसी को फाइनेंस चाहिए तो मैं फाइनेंस करूंगा, लेके आ। तो मैं लेके गया नोएडा का प्रोजेक्ट। तो उसने अपना चेकलिस्ट दिखाया, देखो ये लिखा हुआ है कि पहली बात, नोएडा में मैं फाइनेंस नहीं करूंगा। दूसरा, मेरा ये इंटरेस्ट टर्म है, 2% पर मंथ लूंगा। थर्ड थिंग, इसे 200% सिक्योरिटी लूंगा। फोर्थ थिंग, मेरा वकील अप्रूव करेगा तो ही मैं करूंगा, उसके ऊपर कोई डिसीजन अपने दिमाग से नहीं लूंगा, पेपर वर्क वो चेक करेगा। फिफ्थ थिंग, पास्ट रिकॉर्ड चेक करूंगा पूरा, उसका क्रेडिट हिस्ट्री। तो जो बोला इस चेकलिस्ट में एक भी चीज मीट नहीं होती है तो मैं नहीं करता काम, जब भी करूंगा तो फंसूंगा। तो दिस काइंड ऑफ चेकलिस्ट अबाउट योर बिजनेस will help you having clarity in your business, that what kind of client you work, what kind of service you're going to deliver. So these are some of the best mission statement on internet. JetBlue का है, टेस्ला का है, लिंक्डइन का है, पेपाल का है, अमेजोन का है, नॉर्डस्ट्रॉम का है, तजुर्बा का है। अरे आधे दिन तो आ जाओ, यहाँ कैसे चलेगा? पूछना है डिनर कभी लोगे, मैं कहा 8 बजे। तो ये इंडस्ट्री लाइफ साइकिल होता है, 4 स्टेजेस हैं, इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मैच्योरिटी एंड डिक्लाइन। तो लाइफ का भी हमारा एक लाइफ साइकिल होता है। जब हम पैदा होते हैं, फिर हम पढ़ते हैं, फिर हम बिजनेस में आते हैं, फिर बिजनेस में हमारा ग्रोथ होता है, पीक आता है, फिर थोड़ा थोड़ा नीचे जाना शुरू होता है, डिक्लाइन पे जाता है, कंसोलिडेशन होता है। तो इंडस्ट्री का भी ये 4 साइकिल है, ध्यान में रखना, हमेशा बहुत ध्यान से सुनना। तो इंट्रोडक्शन फेज जैसे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का था, तो 25 साल 1890 से शुरू हुआ, और पर्सनल कंप्यूटर्स 1970 में शुरू हुआ। फिर डिफरेंट कंट्रीज में डिफरेंट डिफरेंट लाइफ साइकिल होता है। जैसे ऑटोमोबाइल का भी इंडिया में ग्रोथ चल रहा है, रशिया में, चाइना में, इंडिया में अभी ग्रोथ फेज में है। तो ये आपको ट्रेंड जरूर समझने हैं व्हेनेवर यू आर गेटिंग इनटू इंडस्ट्री और आपके इंडस्ट्री में। क्योंकि ग्रोथ फेज में जब आप इंडस्ट्री में जाते हैं, कैश फ्लो बहुत है, धंधा आ रहा है, एवरीबॉडी इज डूइंग अमेजिंग बिजनेस। तो इसको समझना बहुत जरूरी है। सो आई वांट यू ऑल टू टाइप इन द चैट बॉक्स, आप जिस इंडस्ट्री में हैं वो ग्रोथ स्टेज में है, एकदम नई है, या मैच्योरिटी है पूरा फुल्ली, और डिक्लाइनिंग है। तो लेट्स टॉक अबाउट द इंट्रोडक्शन। क्योंकि कहीं ना कहीं अब किसी स्टेज में आप पिवट करेंगे, यू विल गेट इनटू समथिंग न्यू। तो शुरू से यू गेट इनटू द ग्रोथ। जैसे अभी पीपल हु गॉट इनटू क्रिप्टो वेरी अर्ली स्टेज में मिलियंस ऑफ डॉलर। भैया म्यूट कर लो सारे अपने को, डिस्टर्बिंग एवरीवन एल्स। So get into in the beginning,
or wait a while and enter later when customers know the product offered by the industry exists and there is a market for them. And this is a better way. So two decisions, whether you want to be pioneer or you want to be the second or third entrant. So sometimes first mover is advantageous. Barnes and Noble was the biggest competitor. Without having any store, Amazon was able to disrupt the market and took over the entire market. And it's always unprofitable. It's a cash burn model. आपका पैसा जलेगा उस टाइम में. So that you should never do. मेरे पास बहुत सारे लोग आते सर नया आइडिया है. मैं बोला पहली बात नया आइडिया सक्सेस इज ओनली 20%. 80% फेलियर चांस. दूसरा अपने पैसे से मत करना, जलाना मत. थोड़ा बहुत लगता है अपना, आई मीन इनिशियल कैपिटल, बट दैट जो बर्न होता है मार्केटिंग में, दैट शुड नॉट बी योर्स. गेट फंडेड एंड दैट इक्विटी नॉट डेट. डेट लिया तो फंसोगे, ब्याज का मीटर, और डिफॉल्ट हुआ तो गुंडे पीछे. So first mover का बात करें, there are significant costs for product development, marketing. Research and development needs a lot of financing. Market is very expensive, and it is very difficult to break even technological uncertainties. So there are no guarantee that new technology that is much better would come up from somewhere. So it's very risky. But if you enter later, so you watch, learn from other people's mistakes, and then you exploit the mistakes of other people. And often larger firm will acquire a fast-growing startup that has successfully gone through the introduction phase. Like Flipkart was acquired by Walmart. Now coming to the growth stage. Once the introduction phase is over and industry enters the growth stage, the price of product is relatively high now. बहुत सारे substitutes are not available, and this become very attractive and very profitable. So when we started garment export, that was a very high growth, very high growth. 40% incentive by the government, 40%. Cash. 40% margin on our cost of product, or 50% margin. तो आप 1 करोड़ का शिपमेंट करो, 1 करोड़ 80 लाख वापस आ रहा है. And then very high demand. जो बना दो बिक रहा है. Very, very, very low quality demand from the customers. Dream. So that is growth stage. It means sales grow, profits grow, and then a lot of new people come in. I'll give you a case study. One of my friends was into import of pearls from Africa, Japan, and other places. His company name is Tara Pearls. His father's name is Tara Chand Sethi. So Tara Pearls in New York. And I remember he used to tell me in 86, 87, 90s, he'll go to Hong Kong, Tokyo, various fairs. He'll take his entire team, 8-10 people from his office. And they were doing millions of dollars of cash sales there. Now in early 2000, they're all suppliers opened up their office in vendors in New York. Now how do you compete with them? Earlier you were buying from them, adding your margin and selling. Now they're selling direct. So they're cheaper than you.
So what Tara and Sons did, they started branding themselves. That was the corporate strategy. So now Tara Pearls is one of the known brand within next 20 years and sells at a premium at large retailers like Saks Fifth Avenue, Tiffany's of the world. So this is how when the decline phase comes or growth phase, lot of competitors join. अरे ये तो कल कुछ नहीं था, अभी करोड़पति हो गया, गाड़ी आ गया, इसके पास बंगला आ गया, हम भी यही करते हैं. The industry become very popular and a lot of people enter. Like e-commerce, it happened. Coaching industry is going through that. But the pie is still growing. So sales increase. So you can spend on advertising, increasing brand popularity, production capacity, economies of scale. The unit cost will decrease. And more unit you sell, the lower the cost per unit. So electric cars are between introduction phases over now. They are entering into the growth stage. Everything is going electric. The bike, the motorcycle, the scooter. And Tesla is moving ahead now, building a large, biggest plant in the world. Electric batteries. And then you start to expand internationally, open offices all around the world. And when you become popular in one country, it becomes easy for you to become popular in another country. And then it becomes a seller's market. There's more demand than you can fulfill. So strong brand awareness happened at this time, favorable cost structure happened, bargaining position, more sales, and very, very profitable at that time. You can see here, this line is for iPhone. This is what happened when the industry grows. New smartphone, introduction part over, growth. Now comes the maturity stage. All major companies have entered the market. Competition has increased. So some people start to lose, some win. And direct result of competition is lower prices now. The price pe cutting chal raha hai ek dusre ka. And several companies will try to win a higher market share by offering a standardized version of the product at a lower price. And the last comes the decline phase. It becomes an obsolete industry. So decline phase is characterized by an absolute decrease of sales, at least 3 to 4 year continuous decline of sales. Customer abandon the market due to changing taste or emerging new industry. And some business will be tempted to discount heavily and slash their prices, which will lead to negative margins. And companies will abandon the market. And very few, 1 or 2 people remain and keep functioning on a very, very lower margins. So there are 4 main ways to deal with the declining phase. You can abandon the market completely and disinvest your assets. So harvesting strategy. The harvesting strategy is reducing investment, expenditure, no R&D, no marketing, no investment in capex, only focus on cash flow, and that low margins also become good for you. Or one more thing happen, when everybody quits, you remain, you are a winner. सब भाग गए, अभी आप ही रह गए, तो जो थोड़ी बहुत डिमांड है, you are catering it. And you become a market leader. Also, there is a chance of becoming a market leader. Or continue to execute a niche strategy. Out of that, pick up one niche and be the best in that. Any question here? Now we will move into a design thinking
very, very high value learning for today. Any questions on this part of the business strategy thing? Or anything you have learned from this which you can implement in your business? Sir, one question. हाँ जी. ये जो अभी ग्रोथ साइकिल है, ठीक है, करंटली मूव कर रही है, सो हाउ डू वी कीप इन कांस्टेंट अब मॉनिटरिंग कि अभी ये किस स्टेज पे है, क्या आगे का प्रोजेक्शन क्या है, व्हाट इज द राइट मेथड टू इवैल्यूएट दैट? देखो, सेल्स ग्रो हो रहा है, प्रॉफिट ग्रो हो रहा है. नहीं, वो तो ग्लोबल लेवल पे है या कंट्री लेवल पे, इसका कहीं पर मिलता है कोई रिसर्च वगैरह? नहीं, बहुत कुछ इंटरनेट पे अवेलेबल है, आपको खुद को भी फील आ जाता है कि यार सेल्स इज डिक्लाइनिंग. अभी आपके पास मान लो 2 करोड़ का सेल है साल का, अगले साल 1.5 हो रहा है, फिर 1 हो रहा है, कुछ तो गड़बड़ है. व्हाई इट इज Okay. डिक्लाइनिंग? अगर आप मार्केटिंग भी कर रहे हो, सब कुछ ठीक कर रहे हो, डिक्लाइनिंग कंटिन्यूअसली, तो डिक्लाइनिंग है ही, आप खुद ही फील कर रहे हो. अदरवाइज देयर लॉट ऑफ रिसर्च अवेलेबल ऑन गूगल. गूगल भगवान सब कुछ जवाब देते हैं जो भी ढूंढो. यस, थैंक यू. आज आरओसी की साइड से हमने 3 कंपटीटर का कितने पुराने हैं, कितना प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है, कितना उनका रेवेन्यू है, सब कुछ मिल गया है. यस, एनीबॉडी एल्स? लेकिन सर अभी जो भटनागर साहब ने क्वेश्चन पूछा कि आप ये ट्रेंड्स का ट्रैक कैसे रखोगे, जी. तो अभी आपने कहा कि अगर सेल्स कंटिन्यूअस डिक्रीज हो रहा है तो दैट इज वन बिगेस्ट इंडिकेटर. हाँ. लेकिन वो सेल्स मार्केट सैचुरेशन के वजह से डिक्रीज हो रहा है कि हमारे एफर्ट्स किधर कम पड़ रहे हैं या समथिंग वी आर डूइंग रॉन्ग उसके वजह से डिक्रीज हो रहा है, ये कैसे गेज करें? तो 3 कंपटीटर का आरओसी से डेटा निकाल लो, अगर वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है. ओके. उनका 3 साल का डेटा निकाल लो, बैलेंस शीट. ओके. एक वो पता लगेगा, बाकी गूगल पे रिसर्च करो. अपने कंपटीटर तो सबको मालूम होते हैं ना. यस. यस. अगर वो बढ़ रहे हैं और आप घट रहे हैं तो आप में कमी है, अगर सारे घट रहे हैं तो इंडस्ट्री में कमी है. ओके. है ना? करेक्ट. ओके. एनीबॉडी एल्स? नॉर्मली तो डिक्लाइन तो वो ऑब्सोलीट इंडस्ट्रीज हो जाती है ना, जो ऑब्वियस होती है. एवरीथिंग एल्स इज प्रॉब्ली इन ग्रोथ. मैच्योरिटी भी होता है ना. तो मैच्योरिटी इज गुड और एवरेज और बैड? मैच्योरिटी क्या है, ग्रोथ फेज में आप इतना ब्रांडिंग कर लो. फॉर एग्जांपल, आपको याद होगा टेलीविजन जब आए थे, कलर, डायनोरा, वेस्टर्न, बिक्सटन, टेस्टन, वेस्टर्न, बहुत कुछ आ गया था. ग्रोथ फेज में थी इंडस्ट्री. एशियन गेम्स हुआ था, एवरीबॉडी बॉट ए कलर टेलीविजन. तो हर फैक्ट्री छोटे छोटे इंडस्ट्रियल एरिया में असेंबल करके, चाइना से पार्ट मंगा के करके कलर टेलीविजन बना रही थी. तो जो लोगों ने वो टाइम में ब्रांडिंग किया, क्वालिटी किया, मार्केटिंग पे स्पेंड किया, तो मैच्योरिटी स्टेज पे आके सोनी, सैमसंग और ये कुछ 4-5 बड़े प्लेयर रह गए. तो इंडस्ट्रीज मैच्योर, डिक्लाइन नहीं हो रहा अभी तक भी. टेलीविजन इंडस्ट्री स्टिल एट द मैच्योरिटी स्टेज. राइट. तो नॉर्मली जैसे जब मोबाइल फोन्स थे, मतलब अभी भी हैं, तो एक टाइम में लग रहा था कि अब मैच्योर हो गया है, बट यू नो फिर वो ये टच स्क्रीन आ गए, तो इट्स लाइक यू नो इट ऑलवेज इवॉल्व्स, जैसे कहते हैं. वेरी गुड. जैसे ऑटोमोबाइल में इलेक्ट्रिक व्हीकल आए हैं, हाँ. तो इंडस्ट्री के अंदर भी इनोवेशन और इंट्रोडक्टरी फेज आते हैं. अच्छा. और ये मैं मतलब जो प्रोडक्ट्स होते हैं उसी में होता है या सर्विस इंडस्ट्री के भी यही होता है? मैं लाया ना OKR, बिजनेस कोच हजारों आ गए. राइट. तो मैं OKR लेके आया. अभी मैं ला रहा हूँ हाउ टू बिकम ए यूनिकॉर्न, और थोड़ा नया करूंगा, उसके बाद कुछ और नया R&D करूंगा. जो SMEs, हमारा मार्केट है SMEs, दे डोंट अंडरस्टैंड लीन स्ट्रेटेजी, वो करूंगा. 6 सिग्मा करूंगा. ये सब बड़े बड़े कॉर्पोरेट करते रहे, which I will
research, I'll get the expertise and teach SMEs. So SMEs के लिए कुछ नया नया होता रहेगा ये. So service sector also you can innovate, do R&D and being ahead of your competitor and keep working on your branding so that people perceive you as the best. Right. Anybody else? What is your industry, Kakoli? The coaching, life coaching. Life coaching. Now there are thousands or millions of life coaches around. Yeah. And need bhi hai. Yes. There is a strong demand also for life coaches. और उसी में मेरा एक्सपर्टाइज जिसमें मैं काम कर रही हूँ या करने वाली हूँ, that is emotional intelligence. Right. So if you are able to explain that you have a different niche and you are different than other people and then keep on branding yourself, Yeah. you will be the market leader in this. Sir, can I ask one question to Kakoli? Yes, please. आप भी कोच हो, सुरेश सर भी कोच है, तो आप में और सुरेश सर में क्या सिमिलरिटी है और क्या डिफरेंस? So I'm a life coach और मेरा जो expertise है that is emotional intelligence. And sir is a business coach expert in OKR. That is different. Simple difference है, सर गुरु हैं, हम उनके चेले हैं. No, but on a serious note, Kakoli, now since this Makran asked very intelligent questions, मैंने तो Makran का होना बहुत जरूरी है, नहीं तो कोई क्वेश्चन नहीं पूछता है. तो आप now लाइफ कोच क्या करता है पहले? बिकॉज मैं तो बिजनेस इनहेंस करता हूँ. लोग मेरे पास आते हैं कि मेरे को ये हो रहा है, मेरे को डिप्रेशन हो रहा है, बोला भाई आई एम नॉट हियर. Exactly. सब्जेक्ट नहीं है. मेरे से बताओ प्रॉफिट कैसे बढ़ाना है, मैं बताऊंगा. कैसे हायर करना. आप क्या करते हो? So in life coach, if a person or individual is stuck in their life, they are not able to find out any solution or the purpose of their life. They get stuck in relationship, career बोलिए, just stuck, thought process में stuck. उसमें this life coach helps them to mentor, guide, to understand themselves properly. So my first criteria is to know yourself, who you are, and then move on to the next level. जो मेरा पूरा system है करने का. So there is a set format how I proceed on this. Your challenges in your life, how you are doing it, what you are doing, how you need to think separately or differently. That's the way. Is it more like psychologist? Psychologist नहीं बोलूंगी, but a lot of things are connected because emotional intelligence जो मेरा फुटे है, that is also connected to mental health. So if you are stuck like mental health, if you are not for example anxiety है बहुत ज़्यादा या stress level बढ़ा है या क्यों बढ़ा है, but again we are not getting into the psychology एकदम पूरा का पूरा, it's a little bit different. But you are nowadays every organization are looking for emotional intelligence because IQ से भी ज़्यादा important है how emotionally inclined you are to your people or friends or family or as an individual. So as an entrepreneur, आप emotionally कितने inclined हो towards your employees to get the business or to achieve your certain goals, what you are planning to do. So that's how we are doing it. मकरन जी, मैं बोलूं? बोलिए. This year, actually, Kakoli has changed my life because I have taken her mindset. She says the mindset. Incredible program. you. I call incredible you. Yes, incredible me. She has taken out from me, and that's why I'm here. So this is what I would say, that she has perfect mindset. I feel that. Okay. Thank you. Got it. I will be in touch, Kakoli. Definitely. We'll talk. Yeah, sure. अभी चेतन कुछ नहीं बोला आज. Sir, I'm little out. I'm driving right now, so. अभी भी उसका सर हैंगओवर उतरा नहीं है जीरो का. कौन सा हैंगओवर? सर वो गया हुआ था, अभी जीरो फेस्टिवल होता है अरुणाचल प्रदेश में है जीरो, सो वहां का एक फेस्टिवल में गया हुआ था.
बिगिनिंग ऑफ द मंथ वहीं पे था, उसके बाद दुर्गा पूजा, तो ये सब कुछ मिला के अभी हैंगओवर है। फिर आज तो उसको खुशी मिली है जो वो जा रहा है दिसंबर में ट्रैवल कर रहा है, सो दैट इज ऑल्सो अ वेरी बिग थिंग फॉर हिम। सो हम लोग ये डिस्कस भी कर रहे थे। So for any entrepreneur, the travel which he is doing is an awesome. I think Chetan, जब time मिले तो do share with the community. It's an amazing platform for each and every entrepreneurs. Yeah, that I can. क्या कर रहा है जीरो क्या? सो जीरो बेसिकली गांव है अरुणाचल प्रदेश में। वहाँ पे बहुत बड़ा, माने इंडिया का सबसे बड़ा म्यूजिक फेस्टिवल होता है सनबर्न के बाद, जहाँ पे करीबन 12,000-20,000 लोग आते हैं और वो 4 दिन पूरा दिन रात चलता है, जो अरुणाचल की गवर्नमेंट खुद अब ऑर्गेनाइज करने लगी है। पूरा जीरो वैली में होता है। सो आई वाज देयर डूइंग दुर्गा पूजा। एंड अभी जो नेक्स्ट है दैट इज जागृति यात्रा। सो जागृति यात्रा बेसिकली एक फाउंडेशन है जो कि बिजनेस एंटरप्रेन्योर्स के लिए जर्नी करती है, वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट ट्रेन जर्नी, 8,000 किलोमीटर 15 दिनों में 12 शहर में, जो कि बॉम्बे, बेंगलोर, चेन्नई, मदुराई, बहरमपुर, देवरिया, दिल्ली, अमृतसर और फिर बॉम्बे, ये पूरा लेके जाती है। मैं शेयर कर दूंगा ग्रुप में। तो इसमें होता ये है सर कि 500 लोगों का सिलेक्शन होता है। आपको बहुत बड़ा एप्लीकेशन फॉर्म्स है, इंटरव्यूज है, उसके पास जाने के बाद तो अगर आपका सिलेक्शन होता है तो नियर अबाउट दे कॉस्ट टू 1 लाख फॉर 15 डेज, जिसमें आपका ट्रैवलिंग से लेके फूडिंग एवरीथिंग इज देयर, यू नो, स्ट्रेस। आपको सिर्फ जाना रहता है बॉम्बे एंड इट स्टार्ट्स फ्रॉम देयर। और वहाँ पे कैलकाटा में, बैंगलोर में और बहुत जगह जहाँ जहाँ पे IITs है, IIMs है, वो वहाँ पे बहुत अच्छे मेंटर्स को बुला के कोच कराते हैं, आपको 1-1 घंटे का सेमिनार कराते हैं। बहरमपुर, देवरिया जहाँ पे इंडस्ट्रियल एरिया है, वहाँ पे आपको इंडस्ट्री विजिट कराते हैं, आपको दिखाते हैं कि हाउ इंडस्ट्री इज रनिंग, हाउ यू नो यू कैन बी इंडस्ट्रियलिस्ट विद शॉर्ट कमिंग। बहुत तरह के अलग अलग चीजें हैं। बहुत सारे 12 मेंटर्स जाते हैं आपके साथ, दोज हु आर financiers, those who are into bank officials or into higher post India and abroad, those who can fund your business, those who can listen to your pitch। तो आप वहाँ पे एक कोलैबोरेशन देख सकते हो, इन्वेस्टमेंट्स देख सकते हो, बहुत तरह की अपॉर्चुनिटीज होती है इस तरह से। सो दे कैरी दिस थिंग विच इज फॉर 15 days and 8,000 kilometers। तो पूरा कैंपिंग, टेंटिंग, होटल्स, अलग अलग माने जगह पे अलग अलग फैसिलिटीज के साथ दे प्रोवाइड यू। सो मैं लास्ट 2 साल से वेट कर रहा था, लेकिन कोविड के बाद हुआ नहीं, एंड दिस टाइम आई गॉट सिलेक्टेड एंड सिलेक्शन विद 55% ऑफ स्कॉलरशिप विच वाज लाइक वेरी गुड। तो मेरा टोटल 45,000 ही लगा नियर अबाउट। आई एम वेरी हैप्पी इन दैट। तो ये चीज है जो कि 24 दिसंबर से 8 जनवरी तक चलेगा। सो आई विल बी कमिंग बॉम्बे आल्सो बिफोर दैट, तो आई एम प्लानिंग दैट आल्सो। तो डिजाइन थिंकिंग है क्या? एनीबॉडी हैज गॉट एनी आइडिया? नो आइडिया? आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग। हाँ, ब्रेनस्टॉर्मिंग बात है, एकदम एकदम आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग। लेकिन आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग क्या है? अकेले नहीं होता है। तो देयर आर वेरियस स्टेजेस, और डिजाइन थिंकिंग को बिजनेस में और प्रॉब्लम सॉल्विंग में कैसे अप्लाई करें, दैट इज व्हाट वी गोइंग टू कवर। तो इसके 5 स्टेजेस हैं। नंबर 1 है एम्पैथाइज। So empathize means you want to come out with a product or service. Now, what is your customer pain point is, and how is the customer going to benefit from it, or how it is going to solve his problem? That is empathizing. So when you clear that, आपको थोड़ा क्लैरिटी हो जाता है अपने टारगेट ऑडियंस का कि उसके लिए मुझे कुछ करना है। My product and service is going to solve the problem for that customer or client. And then you define the problem. कि कैसे आप, how your problem is, what is the problem actually? And what is your product and service? And then you ideate to make it better or different. And then you make a prototype. आप एक सैंपल बनाओगे, फिजिकल प्रोडक्ट है या आपका कंटेंट है फॉर द कोचेस एंड ट्रेनर्स, they'll make a content of it, and then they will test it with the real audience. तो जैसे हम लोग नेचर एब्सोल्यूट में कोई नया शैम्पू लाते हैं तो पहले 100 बॉटल सब दोस्तों रिश्तेदारों को देते हैं टू गेट द फीडबैक।
And then we know whether it is very dry or it is good or not good. So these are the 5 stages you covered. तो बहुत सैचुरेटेड वर्ड ऑफ प्रोडक्ट है, बहुत सारा भीड़ है, बहुत सारा नॉइस है, 100,000 मिलियंस ऑफ प्रोडक्ट, टीवी चैनल, मीडिया, और उसपे बहुत सारी चीजें आ रही है, जा रही, बिजनेसेस, नए प्रोडक्ट आ रहे हो, फेल हो रहे हैं. तो इनोवेशन जो आउट ऑफ द बॉक्स है, जो इनोवेशन है, दैट हैपेंस थ्रू डिजाइन थिंकिंग. It's a process of crafting solution using creative problem solving tools. That is the definition of design thinking. Design thinking is a process of crafting solutions using creative problem solving tools. And Apple, Capital One, Airbnb, ये सब लोग इसको पूरा यूज करके these companies have become totally innovative and new idea companies. So to keep up, even in your existing business, that how are you going to innovate, how are you going to differentiate, जो मैं पहले भी बात कर रहा था, your niche. So multinational companies, Google and all, they allow 20% time to their employees for creativity. Anybody here has seen Google Office inside? किसी ने देखा? So I visited their office in Hyderabad. मैं तभी Google पे बहुत पैसे खर्च करता था. तो उन्होंने अपने टॉप एडवर्टाइजर्स को बुलाया था कि एक दिन का ट्रेनिंग सेशन करो. I went especially to Hyderabad कि गूगल का ऑफिस देखने को मिलेगा. And that I am talking about 2000, around 2010. 12,000 square feet cafeteria, Chinese, continental, Indian, South Indian. 4 तरह का खाना. Every employee within 6 meters or 10 meters had the food station, जिसमें कॉफी, चिप्स, बिस्किट, केक ये सब मिल रहा है, कोक. That play station, आपको गेम खेलना है, मूवी थिएटर, स्पा, आपको खाली सोना है, योगा करना है, मेडिटेशन करना है, टेबल टेनिस खेलना है, बिलियर खेलना है, स्नूकर खेलना है, मूवी देखना है, सब कुछ उधर है अंदर. And the whole environment, the colors and everything, वो क्रिएटिविटी जगाने वाला था. और कोई आने जाने का टाइम नहीं है. 24 आवर्स ओपन ऑफिस, आपको 8 घंटा ऑफिस में बिताने का है. और प्रोजेक्ट कब शुरू किया, कब खत्म किया, वो ऑनलाइन आप लॉग इन करोगे तो पता लगेगा कि आपने प्रोजेक्ट पे कितना देर काम किया. तो आप आ रहे हैं, 8 घंटा आपने काम किया, 2-4 घंटा आप सोए, पिक्चर देखा, मूवी देखा, खाना खाया, वो अलग से. तो 20% टाइम दे अलाउ कि आप 8 घंटे में से 2 घंटा यू कैन स्पेंड ओनली ऑन योर क्रिएटिविटी, और खाली रहो और सोचो खाली. Creative is the most important skill, outranking integrity and global thinking. So creativity पे ये modern organizations, they are spending time and money on employees' creative thinking. So product improvement, better customer service, innovative new product service system which takes your business to the next level. Company culture, creativity, friendly workplace environment create करना है. And why is creative culture or corporate culture is the key to attracting and retaining great talent. So आज के जो बच्चे हैं also,
दे आर नॉट दैट टाइप अब, क्यों आप दिन भर उनके सिर पे बैठे रहोगे, काम करो काम करो। दे वांट क्रिएटिव एनवायरनमेंट, खाना पीना चलता रहे, मूड़े पे बैठे हैं, ब्लैक बीन बैग पे बैठे हैं, जमीन पे बैठे हैं, निक्कर पहन के आ गए, बरमूडा पहन के आ गए, जीन पहन के आ गए। मोर क्रिएटिव फ्रेंडली और एनवायरनमेंट आपने ऑफिस में क्रिएट किया, आपको यंग टैलेंट मिलेगा, वो वेरी क्रिएटिव, जो आपको रोज नए फ्रेश आइडियाज देंगे जो आप सोच भी नहीं सकते। और ऐसे लोग बहुत बढ़िया सोशल मीडिया भी करते हैं, क्योंकि ये कुछ ना कुछ नया बढ़िया निकालते हैं। दे आर वेरी फ्रेश थिंकिंग। वायरस नहीं गया अभी इनके दिमाग में, कंडीशन नहीं है, ये नहीं करो, वो नहीं करो, ऐसे नहीं करो, वैसे मना है। एक कंपनी है आइडियो डिजाइन थिंकिंग, इसके बारे में मैं डिस्ट्रप्टिव बिजनेस मॉडल में और एक्सप्लेन करूंगा। इन्होंने पूरी क्रिएटिविटी लोगों के लिए आउटसोर्स कर दी है। अगर आपके पास बजट है और आप कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं, तो आप इसको बोल सकते हैं कि हमारे लिए क्रिएटिव थिंकिंग करो और प्रोडक्ट डिजाइन करके दो, या हमारा प्रॉब्लम सॉल्व करके दो। और ये लोग क्या करते हैं, दे विल पिक अप टीम ऑफ पीपल फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड। कोई शेफ को उठाएंगे, कोई इंजीनियर को उठाएंगे जिसका प्रोडक्ट से कुछ लेना देना नहीं है, कोई वकील को उठाएंगे, कोई ग्राफिक डिजाइनर को उठाएंगे, और उनको बोलेंगे तुम ब्रेनस्टॉर्म करो कि तुम कैसे बनाओगे। That's how IDEO works. So we'll embark on a journey and discover new opportunities for innovation today. Entire design thinking process को बात करेंगे हम। So by the end of this class, you will deeply understand कि design thinking होता क्या है and how you can apply in your business for innovating new solutions and new services. तो बहुत ज्यादा ये अभी तक यूएक्स डिजाइनर और आईटी कंपनीज करते रहे ऐप बनाते वक्त, बट नाउ एंटरप्रेन्योर्स और सोशल एंटरप्रेन्योर्स दे ऑल डू इट। तो आपको नेक्स्ट सब्सक्रिप्शन बेस्ड सॉक्स का मॉडल करना है, जैसे गोपाल गोस्वामी ने ये सेशन किया। तो इज स्टार्टिंग ए न्यू ऐप, न्यू बिजनेस ऑफ सब्सक्रिप्शन बेस्ड सॉक्स। लास्ट ईयर उसने ये सेशन किया था। और आपको कोई ऐप बनाना है टू मेक पीपल लाइफ बेटर, या आपको क्लीन वाटर सबको देना है इस प्लेनेट अर्थ पे, उसके लिए क्या करना है। तो प्रोसेस यही है डिजाइन थिंकिंग। अभी ब्लिंकिट का हमने बात किया था, ये क्लियर कट एग्जांपल है। एक बहुत ट्रेडिशनल डिलीवरी मॉडल को इन्होंने सिर्फ और सिर्फ लॉजिस्टिक से डिस्टर्ब किया। इनका प्रोडक्ट नहीं है, इनका रिटेल दुकान नहीं है, एक ऐप है, वेयर हाउसेज है जगह जगह, और 8-10 मिनट में 15 मिनट में डिलीवरी देंगे। तो ये रिजल्ट होता है डिजाइन थिंकिंग का। व्हेन यू पिक अप डिफरेंट पीपल्स ब्रेन। तो जैसे इसका मैं स्टोरी बताता हूं, ये निरंजन करागी ऑफ कर्नाटका, 3rd ईयर स्टूडेंट ऑफ इंजीनियरिंग, इसने दुनिया का सबसे सस्ता वाटर प्यूरिफायर बनाया 20 रुपए का, जो हर कोई अफोर्ड कर सके। So what he saw a problem opposite to his house. एक स्कूल था, गंदा पानी पी रहे थे बच्चे, काई लगा हुआ था टैंक में, very dirty water. So he developed this water filter, applying design thinking, जो बॉटल में फिट हो जाए, जेब में फिट हो जाए। So he got awarded lot of funding. इसके पास सिर्फ 5,000 रुपए थे। So people say I don't have money is not the problem. So local available, very good quality, can fit into the bottle, fit into the tap, and fit into the pocket. So various things
Guru Shri Shri Ravi Shankar, बहुत सारा foundations, lot of places. He's got distribution in schools, army, CRPF, Navy. Now he's talking about sea water को clean करने का. As per WHO, more than 2,000 people die every day in India. 2,000 लोग मरते हैं. कितना बड़ा problem है. And at least 2 billion people use a drinking water source contaminated with vices by 2025. Half of the world population will be living in water-stressed areas. So where is the award is one. Apple एक ऐसी कंपनी है, they have applied design thinking to the health. So in 2012, Apple became the most valuable public listed company in the history. $600 share price, $620 billion market cap, annual sales $100 billion. अभी कितना है market cap? Anybody's got idea Apple का? हेलो, कोई आइडिया है किसी को? नहीं सर। $3 ट्रिलियन। इंडिया का इकोनॉमी नहीं है इतना। एक कंपनी इतना बनाता है। लेस देन 10 प्रोडक्ट्स, लेस देन 10 प्रोडक्ट्स। So these are the possibilities. Design thinking and innovation at Apple. Consistency in the way the company work. बहुत कंसिस्टेंसी का मैं बार बार बात करता हूं. So बिल एटकिंसन एक हुआ था इनका मैकिंटोश डेवलपमेंट टीम में. Those of us on the original Macintosh team were really excited about what we were doing. The result was that people saw a Mac and fell in love with it. There was an emotional connection that came from the heart and soul of the design team. I read a story that one engineer, there was a flaw inside of the motherboard of Apple. तो इसे चलता है ना, अंदर कौन देख रहा, बाहर से तो ब्यूटीफुल है. तो स्टीव जॉब्स सेड हमें तो पता है ना अंदर डिफेक्ट है. So they put their heart and soul into designing a good quality product. And that is the center of Apple's culture. तो शुरू में 70s में बड़े बड़े कंप्यूटर होते थे, एक एक हॉल जितने, एक एक कमरे जितने. And computer as a tool for individual work unimaginable in 1970. So to help people love their equipment and the experience of using it, level of complexity needed to be reduced dramatically. एक ऐसी चीज को आप सोचिए उस टाइम में जिसका साइज ये है 500 स्क्वायर फीट, 1000 स्क्वायर फीट, 2000 स्क्वायर फीट, उसको एक डेस्क पे लाना है. और वो बहुत कॉम्प्लेक्स एक प्रोसेस था. कोडिंग होना चाहिए, ये डालो वो डालो, तभी कंप्यूटर काम करता था. कंप्यूटर चलाना भी एक बड़ा एक्सपर्ट का काम था. आई रिमेम्बर व्हेन आई बॉट माय फर्स्ट कंप्यूटर, मेरे को एक महीना समझ ही नहीं आया इसको चलाऊं कैसे. वो बोले इसमें डालो डॉस, ये कमांड डालो, ये डालो, फिर ये आपको रिस्पॉन्ड करेगा. तो उसको मैं लिख लिख के याद करता था. अभी इसमें लिखो DOS, फिर इसको ये वाला बटन दबाओ, फिर ये वाला बटन दबाओ, फिर ये वाला कमांड दो, फिर ये वाला रिस्पॉन्स आएगा. साला 5 मिनट 10 मिनट तो उसको चालू करने में लगता था. So to make it simple so that people love it, it actually came from Apple. ये बाद में IBM, Windows, everybody copied it. So that was the innovation Apple did in those days. So starts with design from people need and want, not limited by technology. लोगों को क्या लगेगा, क्या आसान लगेगा, and then apply the technology कि उसको कैसे पूरा किया जाए. That is how the innovation happens. So design is a very well thought through
beyond fashion. Capacity and technology to build it, not commoditize. No compromise here. Simple. So number one is their user desirability, then market viability, and then technology possibility. ये तीन phase है how they were working. So smallest of details are scrutinized, not just appearance, but also functions, feature, packaging. हर चीज को एक बढ़िया तरीके से अंजाम दिया गया. So design thinking kept going deep until they found the key underlying principle of the problem and then built on it. So design is not just what it looks like and feel like, design how it works. Now बहुत गहरी बात है इसमें. ये फोन दिख कैसे रहा है, फील कैसा है, डिजाइन कैसा है, पर ये काम कैसा कर रहा है वो भी जरूरी है. All these things are important when you are applying design thinking. And that simplicity is the ultimate sophistication. जितना simple होगा उतना sophisticated है. Next came strategy and execution. So 76 में Apple was founded. 78 में first computer Apple II. Then 81 IBM co-owned it. 85 Apple market share kept declining and Steve Jobs was fired. बहुत सारे failures आए up till 97. 85 से 97 तक Apple kept failing. And the technology development process became more traditional. अब वो लोग क्या डर के मारे टेक्नोलॉजी क्योंकि फेल हो रहे थे बार बार इनोवेशन में. सो दे वेंट बैक टू द ट्रेडिशनल में जो चलता है वही करते हैं यार, सेफ रहते हैं. और स्टीव जॉब को निकाल दिया गया. So Steve Jobs says process makes you more efficient, but innovation comes from people. So they were calling each other 10:30 at night with a new idea and saying no to 1,000 things to make sure we don't get to the wrong track or to do too much. 1997, Steve Jobs came back. Now what he did, he stopped licensing program, 70% new project eliminate, product line from 15 to 3, website for direct sales, inventory from months to few days, very sophisticated marketing, product development complete secret रख दिया, अपना एक बड़ा suspense create किया what they are coming up with, and USA में facilities factories को बंद करके बाहर ले गए cost reduction के लिए, and they came up with a platform strategy. So design the initial product as a platform with an architecture that will accommodate the development and production of the derivative product. एक platform बना दिया iOS that is supporting your iPhone, tablet and Macintosh, everything. So working intimately with manufacturers and being completely attuned to customer, integrate customers' experience into design and development. A lot of it was empirically derived. Beautiful product that evolves. The importance of design as a motivation to continue innovation rather than a static approach. Now CEO became as a chief innovator. The really great person will keep on going and find the key underlying principle of the problem and come up with a beautiful, elegant solution that works. So Jobs' drive for perfection is Apple's drive for beautiful, elegant product and its superior operations. So Jobs' vision was that Apple's products are to be personal tool for individual instead of enterprise solutions. So they are not working for Apple solutions, are not normally for businesses, they are for you and me. So total involvement of CEO in decision making from strategy to product and service design to packaging. हर चीज वर्ल्ड क्लास.
कुछ बोल्ड डिसीजन हुए, फेल होते तो ये बेवकूफ कहलाते, चल गए तो दे बिकम हीरो. So they took the risk of opening their own stores. खुद रिटेल अपने बढ़िया करेंगे when everything was moving online. They wanted to give different experience to the customers. Develop and integrate own hardware and software and keep product launches secret against conventional wisdom of open platform, collaboration, community design and transparency. तो क्लोज डेवलपर कम्युनिटी से ओपन डेवलपर कम्युनिटी की एरे ऑफ कलर से ब्लैक एंड व्हाइट में आए ये लोग. बाद में इन्होंने विंडोज कंपैटिबिलिटी किया, so they kept it flexible. So the root of Apple success is design thinking, strategy and execution, bold business experimentation, and CEO as chief innovator. So creative thinking, it's having fun. Einstein says creativity is intelligence having fun. So how does creativity and innovation come into play with design thinking? In order to come up with brilliant new solutions, you got to have that creative spark आना चाहिए. Or every one of you, how many of you think you are not a creative person? By the way, आप में से कितने लोग सोचते हैं यार मैं क्रिएटिव नहीं हूं? कोई है ऐसा यहाँ? वेंकट सोचता नहीं है, माया सोचती नहीं है. सर मैं क्रिएटिव नहीं हूँ बिकॉज मैं क्रिएटिव मतलब कुछ और ही, वो क्रिएटिव थिंकिंग मेरे में नहीं है सर, नहीं होगा. ये जनरली मैं भी सोचता था. अच्छा. लेकिन मैंने ये देखा कि मैं जब किसी से बात करता हूं मेरे को नया आइडिया आता है. हाँ ये होता है सर, अकेले नहीं आता है. ये होता है. तो इमेजिन जब ग्रुप बात कर रहा हो आपस में, एज ए ग्रुप वी आर, अभी करेंगे यहाँ पर, वी विल राइट नाउ डू वन सॉल्यूशन, एक निकालेंगे, आप लोग ही निकालोगे. So design thinking cannot be done alone. Quantity and many ideas. So it's just a matter of tapping into it, into this mindset. मैं एक आपको बढ़िया बात बताऊंगा अभी. This is a wonderful quote. Creativity is the way I share my soul with the world. Every child is an artist. The problem is staying an artist when you grow up. हम जब छोटे थे, जब तक ये वायरस नहीं आया था, डाउनलोड नहीं हुआ था, we were very creative. हमें खिलौने खेलने से ज्यादा तोड़ने में मजा आता था अंदर क्या है. Yes? How many of you done that? Children do that all the time. तोड़ने पर डांट भी पड़ती है. हाँ, वो गलत है. बच्चे एक्सपेरिमेंट करते हैं, वो शैम्पू को पानी में डाल देंगे, क्या होता है? बिजली का बटन ऑफ कर देंगे, क्या होता है? That's a creative thinking. और हम लोग उसको दबा दबा के उसकी क्रिएटिविटी खलास कर देते हैं. तो आप लोग ध्यान कीजिए, जब भी कोई बच्चा इधर कूद रहा उधर कूद रहा, उसको रोकिए मत. The more we say don't do this, don't do this, don't do this, don't do this, don't, तो दिमाग में वायरस डाल देते हैं कि तू बेकार है. So there are people, business and technical. So desirable, viable and feasible. तीन चीजें में इनोवेशन बीच में है, इसके बीच में कहीं कि लोगों की नीड होनी चाहिए, वो वायबल होना चाहिए बिजनेस वाइज, एंड फीजेबल होना चाहिए टेक्नोलॉजी वाइज. अभी ये देखिए, एक छाता है, ऊपर से पानी गिर रहा है, उसको बोतल लगा दिया वाटर फिल्टर करके, तो पानी पीने वाला हो गया. कुछ डिजाइन फ्लॉज पहचानिए. ये सॉस की बोतल में हम लोग पीछे से मारते थे ऐसे ऐसे,
नॉर्मल ट्रेडिशनल वे में सोचो कि भैया इसमें से सॉस निकालना है तो बोलेंगे एक लंबा चम्मच बनाओ, पतला वाला, जो अंदर से निकाले। बट डिजाइन थिंकिंग प्रोसेस से इसको डिजाइन में ठीक किया गया और स्क्वीज निकाला गया। सेम वे रिमोट, ये वाले देख के डर लगता है कि कौन सा बटन कहाँ है। अभी ये एप्पल ने सिंपल रिमोट निकाला, 4 बटन जो यूज होते हैं। ये टॉयलेट में जिन लोगों ने पहले सेशन किया वो नहीं बोलेंगे क्या फ्लॉ है। क्या सर, क्या आपने पूछा? ये टॉयलेट में कोई गलती है, गलती निकालो। पानी वेस्ट हो रहा है सर। टेबल के वहाँ है सर, वो जो फ्लश करने वाला पानी, वो है बटन, पानी का बटन लेफ्ट लेफ्ट, वो लेफ्ट में। तो क्या हो गया, लेफ्ट से नहीं चला सकते उसको? I don't know. इसमें पानी वेस्ट हो रहा है सर। इसके वेस्ट वाटर को यूज करते हैं, इसमें वेस्ट वाटर को फ्लश में यूज करते हैं। सर सीट उल्टी लगी हुई है। उल्टी कैसे लगी है? नीचे वाला सर वो पीछे होना चाहिए, जहाँ जो एग्जिट होना है वो पीछे होना चाहिए ना सर। इस पे कोई बैठा नहीं है। नहीं सीट उल्टी लगी हुई है, देखो ना। कैसे उल्टी लगी है? सर सीट का जो वेस्ट जाना चाहिए वो पीछे होता है ना, जैसे फ्रंट में किया हुआ आपने। एज ऑफ द टेबल सर। इसका ये ढक्कन कैसे खोलेगा? सर ढक्कन के अलावा सीट भी उल्टी है, नीचे जो जाना चाहिए वेस्ट वो पीछे की तरफ होना चाहिए। नहीं, सीट उल्टी नहीं है, वो ठीक है, वो ठीक है भैया, ठीक है। जो फ्लश लीवर लेफ्ट साइड पे है। ये ढक्कन नहीं खुल सकता इसका। ऊपर शेल्फ लगा दिया है। ये दरवाजे पहले पुश और पुल होते थे, अभी दोनों तरफ खोलने का एक बना दिया सॉल्यूशन। अच्छा ये बताओ इसमें क्या गलती है? सर लेफ्ट हैंडेड क्या करेगा? ये कौन बोला? सर मैं, यश। तू लेफ्ट हैंडेड है? नहीं सर, राइट हैंडेड हूँ। तेरे को कैसे पता लगा? सर अभी वो वहाँ पे पोजीशन करके देखा खुद को, तो मैं सोचा अगर मैं लेफ्ट हैंडेड होता तो दूसरे के इस पे हाथ चला जाता, क्या करता मैं लेफ्ट हैंडेड रहता तो। अब ये देखो, ये 22-23 साल का है, इसका दिमाग में वायरस नहीं है अभी। तो इसने फटाफट समझा। इसमें लेफ्ट हैंडर कैसे करेगा काम? ये पुराने ताले होते थे। ये एक ऐप का वीडियो है, मैं 2-3-5 मिनट चलाऊंगा खाली। इन्होंने कैसे डिजाइन थिंकिंग प्रोसेस से इसको जीरो फास्टिंग करने का एक ऐप है कि कैसे इसको सिंपल बनाया जाए सो दैट ज्यादा से ज्यादा लोग यूज कर सकें। Hi, I'm Dee, a senior product designer at AJ Smart, and I'm about to show you step by step what happened in a real design sprint that we ran for a product that's now successfully on the market. So let's go into the deep dive of the design sprint we did for the Zero Fasting app, which is all about fasting for general health and well-being. If you don't know what a design sprint is, it's a rapid process for product development that makes sure you validate your ideas with real users to make sure they're going to be successful. You can find out lots more in these videos that will tell you all about the design sprint process. If you have any questions while you're watching this video about design sprints, prototyping, validating with users, just pop them in the comments. So let's dive into the actual case study. The Zero team came to us in 2018 with an app that already existed on the market. And here's what it actually looks like from a 2016 article
The app existed actually from 2016 till 2018 with not too many changes. This is what it looked like here. It was a basic functionality of different types of intermittent fasting with a timer to start and stop the fast and some basic history so that you could keep track of the fast that you'd done. So the challenge that the Xero team came to us with was to enhance user engagement and increase retention in their already existing app. They already had 160,000 monthly active users, which is already a lot. The intermittent fasting world was kind of still small at that stage, so they really already had a lot of the people who were interested in fasting on board, and users were mostly happy. So we were starting from a good point, but the big focus of the Xero team was to not only increase the number of users, but also increase retention. So really focusing on user engagement inside the product. So this is how they... Where we chose as a sprint team to focus on the actual usage of the functionality of the app. This is where the real engagement and interaction. I'll move to the end. I'll share the video आप लोग के साथ link. Must watch it. And this is the end result they got. All screens here. Now you can actually go into the App Store and see the current version of Xero, which looks something like this. So you can see a really updated, clear, simple timer screen, the very clear and simple different types of fasts, and really engaging features that will keep people wanting to come back. So that was a really quick high-level overview of some of the key steps in the design sprint. There's So creative design thinking for business. कोई भी हमारी जिंदगी में कोई नेगेटिव एक्सपीरियंस होता है, वहीं से बहुत सारी लर्निंग और पॉजिटिव आउटकम निकल के आता है. तो कुछ भी चेंज नहीं हुआ, प्रोडक्ट नहीं चेंज हुआ, कुछ नहीं, बट एक एक्सपीरियंस चेंज हुआ, लॉट ऑफ थिंग्स चेंज. तो कभी भी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आए, आस्क योरसेल्फ कि इसका कुछ फनी साइड कैसा हो सकता है. व्हाट अपॉर्चुनिटी, जिसके अंदर प्रॉब्लम के अंदर सॉल्यूशन क्या है, क्या अपॉर्चुनिटी जिसके पीछे है हमारी. व्हाट आर योर आहा मोमेंट, क्या आप ऐसा क्रिएट कर सकते हो लोग कहे वाह मजा आ गया. So it's important to step away because often the insight come from when least expected. बहुत थोड़ा फ्री माइंड चाहिए इसके लिए, डिजाइन थिंकिंग के लिए. Environment, light music, nature, पहाड़, समुंदर, wherever, you know, or a group of people in a nice conference room environment. You need to give yourself time to incubate when you reach a point of saturation or burnout. To take a break and allow the unconscious mind to work its magic rather than simply doing nothing. कुछ ऐसा सोचो, ऐसा करो जिससे आपका क्रिएटिव थिंकिंग और इमेजिनेशन स्टिमुलेट होए. तो ऑलवेज जो आजकल मैं कंटेंट क्रिएट कर रहा हूं, आपने देखा होगा रील्स में, बहुत बार मेरे इसमें एक गूगल कीप पे मैंने बनाया हुआ नोट पूरा, और कुछ भी दिमाग में आता है, कुछ भी कहीं से क्रिएटिव में मिलती है, रास्ते में कुछ भैंस दिखती है, कुछ दिखता है, आई नोट डाउन दैट आइडिया. इसमें एक फोल्डर बना हुआ है रील्स के नाम से. तो कहीं पे मैंने सुना एक बढ़िया शेर, मैं कहा इसको रील में लूंगा. सर्जरी के बाहर लिखा हुआ था, रूम के, हार्ट सर्जरी के बाहर लिखा था, अगर दिल खोल लेते यारों के साथ तो ना खोलना पड़ता औजारों के साथ. अगर दिल खोल लेते यारों के साथ तो ना खोलना पड़ता औजारों के साथ. तो कहीं ऐसा देखा, लिख लिया, इसको रील में कन्वर्ट करूंगा. सर मैं भी व्हाट्सएप ग्रुप बना दिया है मैंने 2 नंबर से. कोई आइडिया, कोई लर्निंग आती है, मैं उसमें कर लेती हूँ. तो बाद में क्या है, क्योंकि मोबाइल हर समय है, तो मेरे डिफरेंट व्हाट्सएप ग्रुप है जिसमें मेरा ये स्टोर रहता है. गूगल से आई एम नॉट फेमिलियर, बट वो रहे ऐसे. कीप एक ऐप डाउनलोड कर लो, कीप एक फोल्डर बना लो, उसमें लिख दिया करो.
ओके अलग अलग फोल्डर बना लो कि ये रील्स के लिए है या ये बिजनेस हाँ मैन के लिए। स्पीच में भी डालने के लिए मेरे को आइडिया रहते हैं कि कहीं स्पीच देना पड़े उसको, फटाफट निकाला बाथरूम में जाके या गाड़ी में, मोबाइल पड़ा, ध्यान में आ गए, ये बोलूंगा आज। सर ऐप का नाम क्या बताया आपने? गूगल कीप, एंड दिस यू कैन शेयर विद योर फैमिली फ्रेंड्स, और पर्टिकुलर फोल्डर आप शेयर कर सकते हो किसी के साथ। सर एक पूछना था आपसे। क्या? आप गोवा गए थे आपकी फैमिली के साथ, हाँ तभी बीच पे आपने एक वीडियो बनाया था, हाँ। रैंडम था या आपके दिमाग में कुछ प्लान था और आपने सोचा था कि मैं गोवा जाके ये कर लूंगा? दैट वाज वेरी ब्यूटीफुल वीडियो। वहां पे शूट भी किया था आई गेस, वहां पे कोई आपका मतलब वो मेरी डॉटर इन लॉ को मैंने दिया, और मेरे को ये था देख के ना कि इसके अंदर से लोग सूरज दिखाते, ये मैं करूंगा वहां। अच्छा, तो ये था कि रील तो अब दिमाग चलता रहता है ना हर जगह, कहाँ बना सकता हूँ कुछ, हाँ बना सकते हो। सोशल मीडिया पे दिमाग चलता है तो कंटेंट इज एवरीवेयर, यू फाइंड स्टोरीज एवरीवेयर। तो उसको शूट किया डिफरेंट डिफरेंट, इसमें एडिटर को दिया मिला दे, फिर दो बनाए उसके, एक में म्यूजिक डाला, एक पे डाला समंदर से 3 चीजें क्या सीखी मैंने। क्या सीखी? यस। तो ऐसे कंटेंट आइडिया दिन भर आते रहते, मैं उसमें डाल देता हूँ। सर आपको एक और शायरी चाहिए सर, आप अपनी रील में डाल सकते हो। क्या? जादू ढूंढने निकलो तो पूरा समुंदर मिलेगा, जादू ढूंढने निकलो तो पूरा समुंदर मिलेगा, अपने अंदर झांक के देखो वहां भी एक जादूगर मिलेगा। वाह मेरे को लिख के भेज देना यार। बहुत सही है यश, बहुत सही है। बहुत अच्छा है। एक्चुअली मैं पहले 2 साल पहले सर लिखता था बहुत सारी शायरी। एक बार और सुना था भैया। हम लोग को लिख के भेज दो भाई, हम लोग सर्विस वालों को बहुत कुछ लगता है। ग्रुप में डाल दो, अच्छा रहेगा। यस हाँ ऐसे विक्रांत के पास भी बहुत होते हैं। हाँ अंदर सभी लोग भी बना देते हैं। ये तो समुंदर जाओ अगर पानी, हर सेशन में एक सेशन के ऊपर बना देता था शायरी। हाँ देखो अभी देखो बना दी, समुंदर जाओ अगर पानी चाहिए, समुंदर जाओ अगर पानी चाहिए, और जाओ तरक्की चाहिए तो सुरेश मन शर्मानी। ऐसा कुछ बन जाता खड़े खड़े, इसमें कौन सी रॉकेट साइंस है। keep.google.com सुधीर ने डाला है। So being in the state of flow is one of the sought after states for creative people. एक flow में चल रहा है, you are enjoying the present, you are have a vision for the future, and you are in a very, very relaxed environment. You are completely absorbed in what you are working on that time in the world. And that's the peak of creativity and performance. That's the time you are at peak. So, me time जो होता है ना, importance of joy, play and me time. So this is part of this corporate culture in these companies. So जब आप, you are very happy when you are in good state, and that activates your prefrontal lobe, which is associated with problem solving and critical thinking. तो इसके लिए relaxed रहना बहुत जरूरी है. If you are in a bad mood, forget about it. Creativity तो क्या, जो solution है वो भी खराब हो जाएगा. तो आइंस्टाइन कहता था, मैं जब आराम करता हूं, सोता हूं, तभी मेरे को आइडिया आता है हमेशा. He used to get his ideas that only. So you got to reward creativity in your organization. You have to encourage your people, your team, to come up with new ideas. That they think out of the box and they are not scared of committing mistakes and suggesting. And recognize creative ideas, give them awards. And publicly giving them awards. So creativity and innovation emerges from seeing the beauty in small things, in unexpected places, and giving them a new life. Whatever we create,
whether it's me or you, we should ask ourselves who is going to benefit from it. Is it going to make someone's life happier? And what is my motivation for creating this? So then comes the discover phase. So take a deep dive. Iceberg कैसे होता है? So innovation actually happens when we look at the things completely different. When you have spark of that genius. बिल्कुल अलग नजरिए से देखना पड़ेगा. जैसे हम लोग जब अभी एक elite लॉन्च कर रहे हैं जिसका मैंने बताया, तो I told the team think कि हम लोग सुबह पार्क पे मीटिंग करेंगे योगा पे, एलीट का. हम क्रूज पे मीटिंग, कुछ भी डालते जाओ आइडिया, कोई भी पागलपन का आइडिया है वो करेंगे. रेगुलर मत सोचो कि कॉन्फ्रेंस रूम करेंगे, वहां मीटिंग होएगा, प्रेसिडेंट बोलेगा, सेक्रेटरी बोलेगा, फिर ये बोलेगा, फिर वो बोलेगा. मैं कहा जब तक वो नहीं मिलेगा मैं चालू नहीं करने वाला इसको. सोचो अभी और सोचो, फेंको आइडिया उसको सामने से. So empathy is the core need to acquire while you're working in the field of human-centered design. That's the keyword. क्योंकि हम लोग एक प्रॉब्लम सॉल्व करने चाह रहे हैं जो एक रियल ह्यूमन चैलेंज है. तो दिस इज द कैपेसिटी टू प्लेस वन सेल्फ इन अदर्स पोजीशन. आप दूसरे की पोजीशन में जाके उस दिमाग से सोचोगे इसको क्या प्रॉब्लम आ रहा है. Then you will be able to. So the ability to see through someone else's eyes without judgment. That's empathy. It may sound very simple, but it's one of the hardest skills to obtain and to cultivate and to develop. अगर आप में एम्पैथी है, आप बिजनेस ज्यादा क्लोज करोगे, आप दोस्त ज्यादा बनाओगे, क्योंकि you are able to understand people without judging them. आप उनको अपना कंधा दे सकते हो, भाई इधर रो ले जितना रोना है. वहां पे बहुत रिलेशन बनता है when you have empathy. Now the art of unlearning, very important part. Everybody pay attention. The more I know how much more there is that I know that I don't know. इसको ध्यान से पढ़िए. The more I know, मैं जितना ज्यादा जानता हूं उतना मुझे ज्यादा पता लगता है कि कितना कुछ ज्यादा है जो मैं जानता हूं कि मुझे नहीं पता है. I'm the wisest man alive, for I know one thing, and that is that I know nothing. जो आप जानते हैं ना, what you know is only 5%. And we think we know a lot. बहुत से लोग सोचते हैं I know everything. हमको क्या जरूरत है अभी सीखने का? You know only 5%. What we know, what we don't know. जो आपको पता है कि आपको नहीं पता, वो 15% है. जो आपको पता है कि आपको नहीं पता है, वो 15% है. ये कितना हुआ? 20%. बाकी 80% आपको पता ही नहीं है कि आपको पता नहीं है. There's so much to know. 80% what we don't know that we don't know. हमें ही नहीं पता कि हमें नहीं पता है. How many of you agree with this statement? 80% वो है हमको भी नहीं पता कि हमको नहीं पता है. तब सोचो स्कोप कितना है लाइफ में सीखने का. How much scope is there? Can I add something? जरूर. Hello.
हाँ बोलो ना। हाँ, इट्स अमेजिंग कि ये भी 80-20 का रेशियो ही आया है। हाँ परेटो। हाँ, परेटो यहाँ पे भी आ गया। आई डिडंट एक्सपेक्ट कि इतना होगा, बट आई वाज अमेज्ड टू सी कि 80-20 यहाँ भी है। या सर मैंने जहाँ तक अभी देखा हर जगह यही लगता है सर, 80-20 लगता ही रहता है, हर जगह लगता है। हर जगह बरोबर एकदम। 80-20 is a universal rule. यूनिवर्सल रूल। सर इसकी टेक्निकल टर्म क्या है 80-20 की? परेटो। परेटो एक इटालियन था, तो इसे आपकी लाइफ में आप कुछ भी देखेंगे 80-20 वर्क। आपका 80% बिजनेस 20% कस्टमर से आएगा, आपके 80% रिजल्ट 20% एफर्ट से आएंगे। सो यू एलिमिनेट दोज एफर्ट्स जो 20% रिजल्ट ला रहे हैं। आपका 20% स्टाफ विल गिव यू 80% रिजल्ट्स। तो बहुत जगह ये लागू होता है। फैमिली में भी लागू होता है। आपका 80% बॉन्डिंग 20% लोगों के साथ रहेगा। बड़ा फैमिली हो तो। हाँ ऑब्वियसली। अगर फैमिली 20% है तो फिर एक बीवी हो तो उससे ही होने का। या इसको ऐसा कह सकते हैं, बीवी की 20% आते हैं अच्छी लगती है। सर बोल नहीं सकते 80% रिजल्ट देती है। तो 20% काम करो तो मोहब्बत बढ़ेगा। है वो 20% क्या है? सॉरी बोलना, आई लव यू बोलने का, थैंक यू, गिफ्ट लेके देने का बर्थडे एनिवर्सरी पे, मूवी दिखाना, घूमने फिरने का, थैंक यू बोलने का, यू आर मोस्ट ब्यूटीफुल वुमेन इन द वर्ल्ड बोलने का। ये 5-6 चीजें कर लो, जिंदगी हमेशा सुखी। टिप्स मिल गए सर, टिप्स। इन्वॉल्वमेंट शॉपिंग करवाने का। माया जी क्वाइटली सब सुन रही है। उसका तो कुछ नहीं, अभी इसके हस्बैंड की शामत आने वाली है। नहीं सर, हमारा लिव एंड लेट लिव वाला फंडा है। ओके। नहीं बट मैडम 80% तो आपका ही है, 20% ही हमारा रहता है। अच्छा, हम लोग शायद उल्टा सोचते हैं। ऐसा है क्या? तो फ्रॉम द प्लेस ऑफ नॉट नोइंग, यहां से क्रिएटिविटी, योर क्रिएटिविटी इज हियर, नॉट हियर व्हाट यू नो। So insight is the key to innovation into the unknown. एक FMCG कंपनी ने, नो ह्यूमिलिटी होना बहुत जरूरी है, डेयरिंग नॉट टू नो कि मुझे नहीं आता यार, मुझे नहीं पता। इन्होंने कुछ $100 गरीब लोगों को दिए कि जाओ शॉपिंग करो टू चेक देयर बिहेवियर, और इन्होंने सब सस्ते प्रोडक्ट रखे आगे आगे कि ये सब सस्ता ही लेंगे। लेकिन उन लोगों ने बहुत रिसर्च किया कि सस्ते में भी क्या फ्री है, कहाँ कूपन है, एक के साथ 2 क्या मिल रहे हैं, कौन सा कब कितने डिस्काउंट पे चल रहा है, किसमें कूपन है। वो $100 को इतना सोच सोच के खरीदा उन्होंने, इनको लगा खाली सस्ता करने से भी नहीं चल रहा, उसके ऊपर भी बहुत कुछ देना पड़ेगा। तो एक मैं आज एक्सरसाइज करूंगा, आधे घंटे का एक्सरसाइज है। आप सबके पास तजुर्बा ऐप है? सबका हो गया डाउनलोड? यस हो गया सर। ओके, नाउ इसमें हम लोग चाहते हैं, प्रॉब्लम यह है कि सब लोग वहां रोज, हम सबको नीड है, हमको चश्मा चाहिए, हमको डेंटिस्ट चाहिए, हमको टी-शर्ट चाहिए, हमको कपड़ा चाहिए, हमको इंश्योरेंस चाहिए, हमको तेल साबुन घी सब चाहिए। हम वो अपना रिक्वायरमेंट डालने के लिए, मैं लोग तो ले आऊंगा, एडवर्टाइजमेंट पे ऐप डाउनलोड करो, 1 करोड़ लोग ले आया। अभी उनको इनकरेज करने के लिए
क्या आइडिया लगाएं कि हर आदमी जो दिन भर की रिक्वायरमेंट है उसको, जो बाजार से खरीद रहा है, कोई भी सर्विस चाहिए जो ऐसे ब्लिंकिट से नहीं मिल रहा 8 मिनट में, दो सर्विसेज, फॉर एग्जांपल होम लोन चाहिए, इक्विटी ट्रेडिंग सीखना है, क्रेन चाहिए, लाइफ कोच चाहिए, इंटीरियर वाला चाहिए, रिक्रूटमेंट चाहिए, वो ऐप में कैसे डाले? नाउ द की हियर इज कि क्वांटिटी नॉट क्वालिटी. यू डोंट हैव टू थिंक कि राइट आइडिया होना चाहिए. यू कैन गो एज क्रेजी एज स्टूपिड एज यू वांट. बच्चे के नजरिए से सोचो. सर एक हाँ, जैसे लाइफ में एक बकेट लिस्ट होता है ना कि क्या क्या चीजें करनी है. हाँ सर वैसे ही एक बकेट लिस्ट बना सकते हैं ऑफ थिंग्स और सर्विसेज जो अक्वायर करनी है विच इज नॉट इन योर स्कोप. कि सबकी एक पर्सनल बकेट लिस्ट होनी चाहिए जो वो चाहते हैं बट है नहीं. तो यू आर सेइंग एक बकेट लिस्ट बनाएं जो सर्विसेज चाहिए लेकिन उनको नहीं मिल रही हैं. हाँ. या प्रॉब्लम सॉल्व करना चाह रहे हैं जो नहीं हो रही है. हाँ. ये तो हो गया वो. मुझे चाहिए आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है. आपको टाई खरीदना है. अभी हमारे बॉम्बे में एक मेंबर ज्वाइन किया है, वो टाई सेट बनाता है ये वाला. लेकिन आप अमेजोन पे जाने के बजाय तजुर्बा ऐप में डालो. आई वांट टू इनकरेज दैट कल्चर. तभी तो काम निकलेगा कम्युनिटी कॉमर्स. सब लोग अपना रिक्वायरमेंट डालेंगे वहां पर कि मेरे को ये नीड है. सर उसके लिए डिस्प्ले होना चाहिए ना, जैसे ऐप में किसी चीज के डिस्प्ले होने चाहिए, तब वो रिक्वायरमेंट का अट्रैक्शन भी आएगा. सर ऐसा कर सकते हैं कि जो हमारे कम्युनिटी में है जो लोग है, जैसे मैं अगर मैं एयर कंडीशनिंग का सिस्टम देखता हूँ तो हर एक को पर्सनल मैसेज आ सकता है कि आज आपका एसी ठीक था क्या, या ऐसा पर्सनली उनको पूछ सकते हैं एज ए क्वेश्चन. देन दे विल थिंक कि नहीं ये तो है बट व्हाट एल्स, क्या और प्रॉब्लम है. मतलब एक पॉपअप क्वेश्चन टाइप का कि आज ये आपका हुआ क्या. या जैसे डेली फिटनेस ऐप जैसे करते हैं कि आज तुम्हारा गोल कंप्लीट नहीं हुआ, वैसे ही डेली पूछ सकते हो कि आज तुम्हारा मतलब आपका टाई अच्छा है कि नहीं, या कल मीटिंग है तो टाई खरीद लिया कि नहीं, या सूट है कि नहीं रेडी, उस टाइप से. सर एक नीड बटन होगा तो भी है. नीड बटन. हाँ है. माय नीड, माय रिक्वायरमेंट सब है. सर मेक इट सिंपल सो दैट पीपल लव इट. जो आपने क्वेश्चन उसमें दिया कि उसमें क्या कि स्पीड भी खुलने का थोड़ा सा मेरे को लगता है. जब मैं यूज करता हूँ उसमें काफी टाइम लगता है खुलने में. तो मैं कुछ रिक्वायरमेंट डालना पड़ता है तो गोल गोल घूमता है तो मैं स्किप कर जाता हूँ. थोड़ा सा इस पे ये ऐड कर सकते हैं कि जो भी कोई पॉइंट सिस्टम डाल दीजिए कि जैसे कोई पॉइंट कोई डालता है रिक्वायरमेंट, सो इट कैन ऐड सम टाइप ऑफ पॉइंट्स व्हिच कैन बी रिडीम्ड अगेंस्ट सम थिंग्स. सो वो क्या है कि अपनी रिक्वायरमेंट भी डालेगा, वो अपनी कम्युनिटी से कवर भी हो जाएगा. एट द सेम टाइम the member who is posting their requirement will also gain something, so that will be a motivation to post. Good. लेकिन ये वाले इसमें स्पैम काफी बढ़ जाएगा. मतलब मैं चीजों को डालूंगा फॉर रिडीमिंग पॉइंट्स, मतलब रैंडम चीजें भी डाल सकते हैं उसमें जिसकी रिक्वायरमेंट. रिडीम तो जब बिजनेस क्लोज हो जाए तब रिडीम के लिए पॉइंट होंगे. वो कोई नहीं, आइडियाज आते जाओ, फिर उसके वो हम सोचेंगे कि उससे क्या नुकसान हो सकते हैं. बट कीप थ्रोइंग द आइडियाज. एवरीबॉडी थ्रो सम आइडियाज. क्वांटिटी चाहिए, क्वालिटी नहीं. तो अगर रिमाइंडर रखें तो आज फॉर एग्जांपल यश ने कुछ डाला और
कल इसका रिक्वायरमेंट पूरा एक रिमाइंडर आना चाहिए, इसका रिक्वायरमेंट है, अभी तक पूरा नहीं हुआ है। So reminders for unfulfilled requirements. यस सर चेकलिस्ट वाली चीज को किसी फॉर्म में डाल सकते हैं इसमें? चेकलिस्ट बोले तो जैसे सर किसी की कोई चेकलिस्ट है रिक्वायरमेंट की, तो कोई एक ऑप्शन हो। सर आप एक और कर सकते हो सर, काइंड ऑफ ऐप में डेली जर्नलिंग इंट्रोड्यूस कर सकते हो, जिसमें डेली जर्नल एंड में डे में लिखेगा व्हाट वर द 3 सक्सेसफुल थिंग्स एंड 3 प्रॉब्लम्स। तो जो 3 प्रॉब्लम्स होंगे वो उसकी नीड हो जाएंगे, एंड वो डेली इनपुट भी लेगा, मतलब इनपुट करता रहेगा कि आज क्या क्या अच्छी चीज हुई, क्या बुरी चीज हुई, एंड उसी के हिसाब से फिर उसकी नीड्स जनरेट होती जाती है। So like जैसे वो वन गुड थिंग वाला चीज भी कर सकते हैं सर, वन गुड थिंग विच हैपेंस जो हम लोग हमेशा बोलते हैं, वो ऐप में कर सकते हैं एक। सर एक today's need इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। कौन बोल रहा है? ये रवनीत बोला, इसके लिए तालियां। सर टुडेज नीड करके डाल सकते हैं, जैसे टू डू लिस्ट बनती है, डेली बनती है, तो ऐसे ही रोज की नई नीड होती है, किसी का बर्थडे है, किसी का एनिवर्सरी है, किसी का कुछ है, तो एक उसको आदत डाल दी जाए टुडेज नीड यहाँ से फुलफिल होने की। तो मतलब जैसे वो एक रोज की अपनी अपलिस्ट जो भी उसको आज का नीड है प्रायोरिटाइज भी कर सकता है, उसको अपनी सारी नीड्स को उसमें लिस्ट आउट कर सकता है, सो दैट रेलेवेंट जिसको भी जो भी कम्युनिटी उसको सर्व कर रही है वो उसके पास अपने आप चले जाए और वो उसको हेल्प आउट कर दे उस दिन के लिए। वेरी नाइस आइडिया। So that way it can happen. That's like just dial पे भी वैसे ही होता है। मतलब वो उसको एक रेगुलर हैबिट ही बन जाए कि भाई आज मेरे को ये चाहिए, तो मेरे को यहाँ से सारी की हेल्प मिल जाएगी जो मेरे को चाहिए। राइट। OKR की जो कमेंट मतलब एक्शन पॉइंट है, उस पे रोज आप क्या क्या कर रहे हैं ये भी डाला जा सकता है। हाँ, वो like it's just like to do list, it's my need list. Yes. Yeah. आने दो आइडियाज, फेंकते चलो, मैं लिख रहा हूँ सारे। 13 आइडिया हो चुके हैं। मेंबर्स क्रेडिबिलिटी का रेटिंग हो सकता है 4.5 4.7। अभी विक्रांत मैं एक टॉपिक पे कर रहा हूँ कि एवरीबॉडी इज इनकरेज टू पोस्ट देयर नीड्स देयर। ओके ताकि ऐप में काफी एक्टिविटी हो जाएगी अगर यहाँ पे लीड्स रोज आने शुरू हो जाए। Then it will become India Mart of the world। यार यहाँ लीड आता है वो। सर अगर ऐसा हो, फॉर एग्जांपल अभी अमोल है इंश्योरेंस में, भाई हम मुझे पॉलिसी चाहिए बोलेगा तो 3 नाम बता दें, तो क्या वो लीड उनको भी ऐसा भी हो सकता है? पॉसिबल है तो वो तो नीड्स में टाइप करने से आता है। मैं अभी खाली आई वांट इनकरेज कि आप लोग अभी 20 लोग यहाँ बैठे हो, अब सबका एक नीड रोज होता है, लेकिन हमें याद नहीं रहता कि ऐप में डाल लें यार अपने। सर मुझे एक ऐसा लगता है कि जितने ज्यादा लोग ऐप पे आएंगे उतना ज्यादा जो नीड है वो क्रिएट हो सकता है। तो ऐप में अगर हम कोई ऐसा कंटेंट डाल दे 1-8 मिनट का, जैसा आपका मोटिवेशनल वीडियो हो सकता है, बिजनेस प्रेजेंटेशन हो सकता है, तो वैसा कुछ अगर हम डालें और लोगों को एनकरेज करें वो ऐप पे आने के लिए, और एक बार वो ऐप पे आते हैं के बाद बीच में एक ऐसा पॉपअप आएगा, डू यू हैव रिक्वायरमेंट ऑफ सो एंड सो, नीड का जैसा बेसिकली। तो पॉपअप फॉर नीड्स। हाँ मतलब ये भी ले भी आया, हमारे पास 1 करोड़ लोग आ गए ऐप में। हाँ, लेकिन हाउ टू इनकरेज देम कि तुम याद रखो तुम्हें व्हाटएवर सर्विसेज और प्रोडक्ट यू नीड, पुट इट इन द ऐप। यू कैन डू लाइक दैट कि अगर ऐप कोई खोल रहा है तो
एक एंट्री पेज आप बना दो कि एक नीड और एक गिव डाल दिए तभी लॉग इन वो होगा. Well, you have to enter a need to go into the app. You cannot access the app without entering a need. सर अलादीन का चिराग डाल दो, वो निकलता था बाहर पूछता था आका क्या चाहिए, तो पूछते. That is very funny way. Very good idea. अलादीन का चिराग, चिराग, it pops up like अलादीन का चिराग. आका आज आपको क्या चाहिए? And everybody is putting his wish, and community is trying to resolve it. वेरी नाइस. देखो कैसे कैसे आइडिया आ रहे. अभी आप ऐप खोलो, एक ऐसे आए एनिमेटेड अलादीन का, आका बोल मेरे आका गुड मॉर्निंग, आज तुमको क्या चाहिए तजुर्बा कम्युनिटी से, मैं दिलाता हूँ. So in my opinion, it should go to sender and receiver should get a private message once they get an inquiry. That is stage 2. Yeah. So and also public display as well as private message. But first of all, encouraging people needed to post their needs. Yeah. After that, it comes to you fast if it is concerning you, and then it's publicly also displayed. सर ऐसा हो सकता है कि गुड मॉर्निंग हो तो गुड मॉर्निंग करके ऐसा कुछ मैसेज आएगा तो पॉपअप होगा गुड मॉर्निंग मैसेज, तो क्या समझ आ रही है इसमें कोई नीड डालना है तो याद भी, ऐसे भी हो सकता है कुछ गुड मॉर्निंग करके मैसेज पॉपअप होगा, सो अगर तजुर्बा ऐप में ये डालना है करके उसको याद भी आएगा जो एक पॉपअप आने से गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग जो भी है. जो मेंबर्स की लिस्टिंग है वो आई थिंक अल्फाबेट वाइज है, so you can change that to rank the people who are putting needs on top ताकि उनकी विजिबिलिटी ज्यादा हो. एक हम लोग कर सकते हैं कि जो अपना नीड डालेगा उसको फिल्म का टिकट मिलेगा उस शहर में. थोड़ी दारू भी मिल जाएगी. Also, you can create a one page product list of the each supplier. एक मिनट, let me, I'm noting this, so go a little slow. सिनेमा टिकट बोला ना लीड का, और some kind of reward for posting lead. Yes sir. सर अमेजन की तरह. Yes. अमेजन की तरह यूजर पर्सोना को समझ कर करके उसके रिगार्डिंग जो भी चीज है उसको थ्रो करें, उससे रिलेटेड ज्यादा इंफॉर्मेशन हो तो अपने आप को ज्यादा रिलेट करेगा तजुर्बा के साथ. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. सर आप अपने ऐप को सर बिजनेस रील्स के तौर पे बना सकते हो सर. लाइक इफ एनीवन कम्स एंड वो रील जैसे हम लोग इंस्टाग्राम पे स्क्रॉल करते हैं वैसे ही आपके इस पे स्क्रॉल करना शुरू करे, बट द थिंग विल बी कि रील जो भी रहेगा वो सब बिजनेस रिलेटेड रहेगा, मतलब एवरीथिंग रिलेटेड टू लर्निंग. तो जितना देर वो ऐप पे रहेगा उतने ज्यादा प्रोबेबिलिटी बढ़ेगी कि वो कुछ एंगेजमेंट करे ऐप के ऊपर. दिस इज अ गुड पॉइंट फॉर एंगेजमेंट कि इस पे भी रील्स डालें हम, एंड ऐप पे एंगेजमेंट बढ़ेगा. दैट्स अ गुड पॉइंट फॉर एंगेजमेंट, बट दैट इज द सेपरेट सेक्शन वी विल डू. नो लाइक एंगेजमेंट बढ़ेगा इन द सेंस देन सर कि जैसे वो स्क्रॉल करते जा रहा है एंड देन अगर आप कुछ मतलब पॉपअप नोटिफिकेशन डाल दो कि आज की कोई नीड थी आपकी, या आपकी टू डू लिस्ट बची है अभी भी फिल करना आज की, या काइंड ऑफ दैट थिंग. ठीक है, नाइस. उसको उससे कनेक्ट कर देते हैं रील को. सर अभी थोड़ा सा इंफॉर्मेशन में ही ये ऐप जो है थोड़ा स्लो वर्क कर रहा है. जैसे मेंबर्स लिस्ट दिखाने में फेचिंग टाइम बहुत ज्यादा ले रहा है, तो जब 1 करोड़ यूजर हो जाएंगे तब तो अगर कोई गलती से मेंबर लिस्ट पे क्लिक कर देगा तो उसको दिखते ही रह जाएगा. वो हम सॉल्व करेंगे. दैट इज ऑलरेडी वर्किंग ऑन इट. आज या कल में ही खत्म होने वाला है ये. वो बिल्ड ऑलरेडी डला हुआ अप्रूवल के लिए. So maximum need resolve पे इंसेंटिव हो जाए, मंथली इंसेंटिव, लाइक
whosoever posts the maximum need and has maximum resolve. आपका आवाज क्लियर नहीं आ रहा रवनीत अभी। तो जो मैक्सिमम नीड रिजॉल्व है उस पे इंसेंटिव आ जाए। मैक्सिमम नीड्स पे इंसेंटिव मतलब नीड पे नहीं, नीड रिजॉल्व पे इंसेंटिव। तो मींस पोस्टिंग द नीड और जिसका मैक्सिमम रिजॉल्व आ गया, जिसको मैक्सिमम रिजॉल्व मिला उसको इंसेंटिव मिल जाएगा, मंथली इंसेंटिव, जो मतलब उससे ऑटोमेटिकली मैक्सिमम वो पोस्ट करने की कोशिश करेगा ताकि उसको मैक्सिमम रिजॉल्व मिले, और जिसका मैक्सिमम रिजॉल्व मिला होगा उसके लिए मैक्सिमम इंसेंटिव हो जाएगा। गुड। सर अगर किसी ने यूज नहीं किया हो तो एक पॉपअप मैनेज आपने आप तजुर्बा आप यूज नहीं किया, हाँ, तो वो स्पैम में आउटराइट रिजेक्ट हो जाएगा। अगर कोई स्पैमिंग ज्यादा कर भी रहा है तो हम रिजॉल्व पे उसको इंसेंटिव दे रहे हैं, ना कि नीड रेज करने पे दे रहे हैं। करेक्ट। तो वो जेन्युइन नीड रेज करेगा और उसको जेन्युइन रिजॉल्व मिलेगा, और रिजॉल्व होने पे उसको मंथली इंसेंटिव मिल जाएगा कि भाई ही हैज पोस्टेड द मैक्सिमम फाइनेंशियल वॉल्यूम और नंबर ऑफ इंक्वायरीज और व्हाटएवर। तो देखो रवनीत इज इंटीरियर डिजाइनर, कितने क्रिएटिव आइडिया आ रहे हैं इसका, सुबह शाम ये क्रिएटिव माइंड में रहता है। सर एक और था कि अगर आपका ऐप मतलब आपको अगर नीड डलवानी है ऐप पे, तो ऐप को नीड बनाना पड़ेगा, और ऐप को अगर नीड बनाना है तो ऐप शुड प्रोवाइड सम सॉल्यूशंस। तो सर अगर कोई आता है ऐप पे एंड ही जस्ट पोस्ट की मान लो जैसे गूगल ब्लॉग देता है, हम लोग सर्च करते हैं कि हाउ टू मेक दिस या हाउ टू डू दिस, तो आपके इस पे आके वो अगर टाइप करता है हाउ टू डू दिस, इट शुड शो ऑल द रिलेटिव रिजल्ट्स या ब्लॉग्स या वीडियोस, एंड साथ में नीचे आता है कि हियर इज द लिस्ट ऑफ पीपल हु कैन हेल्प यू इन आवर कम्युनिटी, एंड देन वो पर्सन जिसने प्रॉब्लम एक्चुअली डाली थी उसको उधर ही लिस्ट भी मिल जाती है फॉर द सेम प्रॉब्लम ही वाज सर्चिंग फॉर। Like search engine type of thing, but for business only. So if a member searching for a course on sales conversion, हाँ, तो उसमें नीचे आ जाए ये हमारे इसमें सेल्स कोच है, who can help you। हाँ सर उसमें ऐसा कर सकते हैं कि जब भी कोई पोस्ट करे, जब भी कुछ डाले नीड, तो उसको देश के साथ जोड़ दे, कंट्री के लिए वो कुछ कर रहा है उसके साथ जोड़ दे। जैसे टाटा बोलता है देश का नमक, तो उस तरह से एक फीलिंग डाले कि भाई हम ये जो ऐप में डाल रहे हैं ये सिर्फ बिजनेस पर्पस नहीं है, हम देश के लिए कुछ कर रहे हैं, उसमें कुछ राष्ट्रीयता की भावना है, कुछ ऐसा स्लोगन हो। So you have to introduce a transactional points or a reward points after the transaction. So at least you'll have some accountability and you can pass on some discounts also. Say that again. So you can have a transactional reward point. Now somebody is buying something and he has to inform your application, as well as he has to pass on some discount. Okay. So there is a motivation for people who's using the service as well as who's giving service also. नीड्स पे सब्सक्रिप्शन टाइप का भी वो कर सकते हैं, तब वो बंदा जैसे एवरी डे उस पे रहेगा सब्सक्रिप्शन मॉडल पे। कि नीड अगर एक बार वो सब्सक्राइब कर दिया या उसने कोई एक नीड उसकी सेटिस्फाई हुई, उस पे उसको कोई ऑफर मिल गया, तो नेक्स्ट टाइम वो यहीं पे आएगा, सब्सक्रिप्शन हो जाएगा। तजुर्बा मेंबर भी मेंबर्स ही है ना ऑलरेडी, वहां पर सब्सक्रिप्शन तो दे ही रहे। तजुर्बा के क्रेडिट कार्ड सर ऐसा भी है कि अगर कोई लॉगिन नहीं किया दिन भर में, उसको एक पॉपअप आना चाहिए कि आपने तजुर्बा ऐप यूज नहीं किया आज, ऐसा भी किया जा सकता है सर। जितने ज्यादा नीड्स होंगे जो जितना पोस्टिंग करेगा। हाँ सर एक थोड़ा सा क्रेजी टाइप ऑफ आइडिया है, बट सर आप अपने ऐप पे सर नीड्स का शेयर मार्केट खोल सकते हो सर। उसमें नीड्स लिस्ट डाउन रहेंगे जो आपके मेंबर्स है, तो वो जो प्रोवाइड करते सॉल्यूशंस वो ही नीड्स आपकी होंगी,
और उसमें आपका खुद का पोर्टफोलियो बना सकते हो एंड आपका दिखा सकते हो कि आपका पोर्टफोलियो फॉर नीड्स का वैल्यू क्या है और मार्केट क्या तौर पे चल रहा है कि लोगों के क्या नीड्स है, लाइक काइंड ऑफ शेयर मार्केट फॉर नीड्स। तो ये जैसे वो एक बॉम्बे में बार खोला था किसी ने, अभी भी है पता नहीं, शेयर मार्केट का यहाँ भी है सर कैलकाटा में। तो वो दिखाता है कि अभी ये वाला विस्की का डिमांड ज्यादा चल रहा अब है। बियर बियर ये खत्म हो गई है, ये है शेयर मार्केट के रेटिंग पे, उस पे चलता है वो। बॉम्बे में वो बार्स का चेन है, इट इज कॉल्ड बार स्टॉक एक्सचेंज। हाँ, बार स्टॉक एक्सचेंज, यस यस, यहाँ पर भी है उसी की। that's creative. That's my area of interest. यस जाजू इज द यंगेस्ट, सबसे कम वायरस है ना सर। खत्म हो गया आइडिया? 25 आइडिया मिले हैं मेरे को। बेस्ट आइडिया मुझे वो लगा, आप ऐप पे जाओ तो पॉपअप आए अलादीन का चिराग। जी नहीं जी नहीं। बोल मेरे आका आज क्या चाहिए तुझे तजुर्बा कम्युनिटी से। व्हाट इज योर नीड? तो दिस इज हाउ आप जब ये एक्सरसाइज करें, अभी तो मैंने 4 स्लिप पे सब लिखा है बिकॉज आई एम ओनली वन राइटिंग, बट व्हेन यू आर इन ए लाइव एनवायरनमेंट यू आर गिविंग दिस, तो ऐसे 10-12 पैड ले लो और एक आइडिया एक जना देगा, वो आप लेके दीवार पे लगाते जाओ, फिर उनको ग्रुप करते जाओ कि ये सिमिलर आइडिया है, 10 लोगों का एक जैसा है, 5 लोग का एक जैसा है। ये मैं सिखाऊंगा, इसमें अभी क्लस्टरिंग बोलते हैं उसको। एंड दिस इज हाउ, और कुछ मैं केस स्टडी भी करूंगा। तो आज के लिए इतना ही काफी है, एंड नेक्स्ट में इसको पूरे डिजाइन थिंकिंग प्रोसेस और 1-2 एक्सरसाइज और करेंगे और कोशिश करेंगे किसी एक का भी बिजनेस लेके यहाँ पर उसका भी कुछ हम लोग डिजाइन थिंकिंग करें। ऑलराइट, सो एनी क्वेश्चंस? सर दिवाली में वेकेशन रहेगा क्या सर? बताओ, हमको क्या है, वेकेशन कर लेंगे। दिवाली कब है? 24 2 ही दिन दिवाली है, 24 और 26। वो सर पूरा वीक। तो 25 को मास्टरमाइंड करना है नहीं करना है, यस और नो? नो सर। थर्सडे को तो कुछ भी नहीं है, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे है, 3 दिन है। दिवाली जो है मंडे को है और ट्यूसडे को विश्वकर्मा है और 20 वेडनेसडे को अभी 20 तारीख को तो ये सेशन तो करना है ना अपना। हाँ 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 बिल्कुल। 27 को करना है। 27 को नहीं सर, फॉलोइंग वीक में करते हैं। तो 27 को हॉलीडे चाहिए। हाँ नहीं सर 20 के बाद सीधा नेक्स्ट मंथ कर दीजिए सर। सर 25 का हॉलीडे हो, 27 का हॉलीडे का तो कोई वो नहीं है, 27 तो ठीक है। सब फेस्टिव को माया जी शायद लोग जगह पर ही नहीं रहेंगे, दिवाली है तो लोग यहाँ वहाँ निकल जाएंगे। 20 का बेटर है बिकॉज दिवाली से पहले ही सारे काम होते हैं। 27 को हॉलीडे मांग रहे हैं ज्यादातर लोग और 25 का मांग रहे हैं। ये हफ्ता 23 से 29 तक आराम कर लेते हैं। हाँ, नवंबर फर्स्ट वीक में वापस शुरू करते। 30 तारीख के बाद चालू है ना हमारा, फर्स्ट को ट्यूसडे उससे मास्टरमाइंड चालू करेंगे। हाँ तो 20 को मिलते हैं पहले, फिर बाकी फाइनल करेंगे। चलेगा सर 18 को नहीं है मास्टरमाइंड, ट्यूसडे वो को रहेगा, 18 को मास्टरमाइंड रहेगा, वो तो चलेगा। 20 को थर्सडे वाला ये डिजाइन थिंकिंग को खत्म करेंगे। बिल्कुल। और तजुर्बा का इवेंट कब है? हाँ जी तजुर्बा को कोई इवेंट कर रहे हो ना वहाँ पे रॉयल एम्पीरियो में? वो तो परसों है दिवाली सेलिब्रेशन। अच्छा परसों है। 15th को है दिवाली पार्टी। सर ये ऐप के बारे में कुछ क्वेरीज है तो किन से बात कर सकते हैं? प्रदीप, ओके जी। सर एक से सर मैं कुछ बोलूं? हाँ बोलो ना सर। ये जो हमने सजेशंस और जो भी हमने सबसे इकट्ठे कर लिए 150 जितने भी आ गए आफ्टर दिस सेशन,
So what is the procedure for selecting which one to go for? इसको क्लस्टरिंग बोलते हैं कि 10-10, 15-15 आइडिया एक साथ लगा दिए कि ये उसके हैं। अब उसको सिलेक्ट करके कि सबसे ज्यादा इस तरफ आया, टीम बैठी है। जैसे अभी हाउ मेनी ऑफ यू थिंक ये पॉपअप आया अलादीन वाला, इज फनी, इज गुड एंड मजा आएगा। इट्स इंटरेस्टिंग आइडिया सर। देखो सबको एकदम अच्छा। ऐसे ही जब आप टीम से पूछोगे ये वाला आइडिया किस किस को अच्छा लग रहा है, सबसे ये अच्छा है, तो उसको डाल दिया। फिर उसको और सैंपल लोगों से पूछा, अभी अपने 10 के हैं, फिर 100 लोग और उसको टेस्ट करेंगे तब फाइनल करेंगे। नहीं, जो आइडिया सेलेक्ट होता है उसके बाद में उसको कुछ और डेवलप भी तो करना पड़ता है। प्रोटोटाइप होता है। अच्छा। उसका जो भी स्क्रीन बनेगा, एक छोटा सा सैंपल बना के हम 100 लोग को देंगे, हाउ डू यू फील अबाउट इट, अगर ये ऐप में डालें, सीधा नहीं डाल देंगे। वन दे से या इट्स वेरी गुड, इट्स लुक्स नाइस, तो डाल दो अभी परमानेंट फीचर। चलो ओके, गुड नाइट।